Very good morning, uh, Ayush and everyone. So today topic is appeal and revision. We have completed the demand and recovery chapter. Now, what is the appeal and revision? If there is any demand against the taxpayer, then taxpayer has the legal appellate mechanism where he can file the appeal within the prescribed time and then ask for remedy, whatever the legal action, whatever the legal course of reasoning is there, he can submit the same, and then there will be the being opportunity of the being heard. So, how many stages of appeals are there in the GST that we will discuss? What is the concept of revision? That also we are going to discuss. Okay. So, this chart would be the overall. So, if you are aggrieved by the adjudicating authority, then you can file to the appellate authority. If taxpayer is aggrieved by the decision of the appellate authority, then he can go to the tribunal. Again, if not satisfied with the order of the appellate tribunal, then he can go to the High Court and then Supreme Court. But if the appellate tribunal is principal bench, then the decision given by the principal bench will be heard directly by the Supreme Court. Okay. And then order passed by an officer subordinate to the revision authority, then revision authority can look into the matter and then pass the order. So we are going to discuss this concept in detail. Relevant definition, adjudicating authority, appellate authority, tribunal. Now, first is section 107, appeal to appellate authority. Appeal to appellate authority by the taxpayer. Now, if the order passed by the adjudicating authority, an appeal against any decision or order passed by the adjudicating authority under the GST lies before the appellate authority. It is important to note that it is only the aggrieved person who can file the appeal. Also, the appeal must be against the decision or the order passed by the Act. See, one important point which we need to always remember, that decision. See, appeal is not always for the order. Law permits us, even if there is some decision given in any form other than order, then that decision is also appealable. Section 107, first appeal. This appeal lies against the decision or order passed by the adjudicating authority. Time limit to file the appeal. The time limit to file the appeal, any person can file the appeal within 3 months from the date of the communication of the decision or order. Now, there is only extension of 1 month if there is a sufficient cause for the delay. So we are calling as 3 plus 1. Normally time limit is 3 months and then 1 more month for condonation of the delay. ठीक है. Form, an appeal is to be filed by the agreed person to the appellate authority in the APL 01 along with the relevant document electronically. A provisional acknowledgement is issued to the appellate immediately. However, the appeal to the appellate authority may be filed manually. So here it may be the important, because this is a change ki whether appeal can be filed manually. Then if the commissioner notified, or the same cannot be filed electronically due to the non-availability of the decision or order to be appealed against the common portal.
मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिकली चैलेंज अगर आता है, क्योंकि हमारी अपील जो मैकेनिज्म है सारी ऑनलाइन है. नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू फाइल ऑनलाइन बिकॉज ऑफ the order or decision is not available on the portal, then portal will not allow you to file the appeal. Then what happen in that case, you can file the manual appeal, and in such case the provisional acknowledgement shall be issued immediately. ठीक है. Second difference that you should note, that appeal is to be filed to the authority along with the relevant document electronically. So whatever the document would be required, that we can submit online also. Now when the decision or order is uploaded on the portal, the acknowledgement indicating the appeal number shall be issued by the appellate authority in the APL 02. In which form the acknowledgement would be issued online? That would be the APL 02. The date of acknowledgement will be the date of filing the appeal. Okay. However, if the decision or order is not uploaded on the common portal, the appellant shall submit the self-certified copy of the decision or order within a period of 7 days. Now, is this required in case when the appeal file is online? Answer is no. This is big change. Earlier, the taxpayer need to submit the document in all cases, whether it is online or offline. Document is required to be submitted, but the requirement actually, if you see, if I have submitted online, all the document went to the department, then why I need to submit again? It says that where the decision is not uploaded on the common portal, then only, it means if it is manual appeal, then only the self-certified copy of the decision or order within 7 days is required. The final and important point, this is self-certified copy. Prior to this amendment, they were required that you need to visit the department, take the sign and stamp that yes, this decision has been given by him, by that officer, and that copy we need to submit to the appellate authority. It means no self-certified. The decision or order is given by the officer. Again, I have to take the sign and stamp of that officer. Then I will go to the appellate authority. One thing, remember that there is one jurisdictional officer, which is normally the adjudicating authority, and the appeal would be like, it is also called as commissioner appeal. It is also called as commissioner appeal. So appeal against that order, it means you have to take signature, sign and stamp from the adjudicating authority, then you will submit to the appellate authority. It is not the same person, it will be obviously different person. The final acknowledgement indicating the appeal number shall be issued by the appellate authority or an officer authorized by him in this behalf. The date of the provisional acknowledgement shall be considered the date of the filing of the appeal. Now, it also says that where the said self-certified copy is not being submitted within 7 days, then what happens? The date of filing of appeal will be the date of submission of that copy. It means ऐसा नहीं कि अगर आपने 7 दिन में सबमिट नहीं किया तो अपील ही इनवैलिड हो जाएगी. नो, the appeal would remain valid. You can submit even after 7 days, but in that case, the date of the submission of appeal would be considered the date on which the document has been given. Okay. The appeal shall be treated as filed only when the acknowledgement is issued. Let's read two small examples. Appeal is filed
Provisional acknowledgement is issued on 10 September. Taxpayer submit the certified copy of the order on 15th September, that is within 7 days. The date of the filing of the appeal will be the date of the 10th September when acknowledgement is being issued. But if the appeal is filed and acknowledgement is issued on 10 September, the taxpayer submit the certified copy on 25th September, then the date of the appeal is 25th September. I hope this difference is clear. Na? After the expiry of the not submitted within 7 days, then date of the filing of the appeal, date of the submission of that copy. So remember this particular difference. ठीक है ना? Okay, Ayush. Pre-deposit. No appeal can be filed before the appellate authority unless the specific amount of the pre-deposit is made by the applicant. The concept of pre-deposit is discussed under the heading number 7. So, sometime practically the question is being asked, sir, I have forgot to deposit or I am not having the money to deposit. Can I file the appeal? You can file the appeal, but that appeal will not be the valid appeal because it says that no appeal can be filed without pre-deposit. Now, what is the pre-deposit? Quantification of the pre-deposit, that we will discuss shortly. Application before the appellate authority by the department. Now, why the department will make the appeal against their own decision? The reason is, sometime what happened, the commissioner feel order passed by the lower authority is not correct, not valid because of some ground, then commissioner himself or can authorize any other person to file the appeal against the department order. Okay. If the department itself may not agree with the decision passed by the adjudicating authority, then section 107 subsection 2 provide that in such case the department can also file an application as if it were an appeal made against that decision or order. The commissioner may on his own motion or request from the other commissioner. Means if I'm a CGST jurisdiction and SGST is requesting or vice versa, then commissioner can call for the examination of the record of any proceeding in which an adjudicating authority has passed any decision or order to satisfy himself about the legality or propriety of the decision or the order. What is the time limit? Will the time limit be same? Answer is no. It will be the 6 month plus 1 month. What is the 1 month? What is the 1 month? आयुष 1 month को हम क्या कहते हैं? Condonation of the delay. Absolutely correct. So what is the time limit if the appeal filed by the taxpayer? What is the time limit to file the appeal by the taxpayer? 3 plus 1. Absolutely correct. And if the department like to file the appeal, then what is the time limit? 6 plus 1. ठीक है? The adjudicating authority, so the commissioner may by order direct any officer subordinate to him. He can also direct some other officer to apply to the appellate authority within 6 months from the communication of the decision or order for the determination of the point arising out of that decision or order as may be specified in the order. The adjudicating authority, no, the appellate authority can condone the delay by 1 month if it is satisfied that there was a sufficient cause for that delay.
The adjudicating authority passed the order on 23rd January, communicated the same day to the commissioner. The commissioner directs his subordinate to file the review application. Now, this appeal is called as review application. See, now it is appeal, obviously, normal appeal, first appeal, but we normally call as review application with the appellate authority till the 23rd July, that is within 6 months from the date of the communication of the order. However, the application could be filed on 3rd August. The AA appellate authority can condone the delay in filing the appeal for one more month, that is 23rd August, if it is satisfied that there is a sufficient cause for the delay. See, there could be the multiple reason. Either tax is less collected. Department will file the appeal if commissioner feel that subordinate was given the order is not appropriate. Suppose there is no point of tax, but they are granting some relief. Like I give you one example, which I was looking yesterday only. So there was an amnesty scheme. You remember recently that the amnesty scheme was launched by the government for initial years 17, 18, 18, 19, 19, 20. That if you have the 73 ka order, then you deposit the tax, no interest, no penalty. Okay. That was operationally made available on probably November. But what happened in one case, the officer has issued a favorable decision for the section 128A to the taxpayer in August only. Now, the commissioner has filed the review application. Why? Because if the mechanism is being launched by the government on the 1st November, how you can give the relief prior to that? So that would be the one example. It could be another situation also, but it is not necessary that it will only be the tax less collected. Yes, this would be the correct ground. This would be the correct ground. Obviously, when there is a loss to the government, then only they will think to file the review application. The application to the appellate authority shall be filed in APL 03 along with relevant document electronically, and the provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately. However, an appeal to the appellate authority may be filed manually. When they will file the appeal manually? आयुष, आई थिंक आप थे, और संजय आप अगर रिकॉल कर पाए या आप अवेलेबल थे तो देन यू प्लीज टेल मी कि अपील फाइल मैनुअली कब कर सकते हैं. Order not available on common portal. Right. Just give me 1 minute. If the order is not available on the common portal or commissioner notified, these 2 points we have discussed in the appeal by the taxpayer. Now, same, if the commissioner so notified or the same cannot be filed electronically. Why? Because the order or the decision for which the appeal to be filed against that
is not available on the common portal. And in such case, the provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately, where the decision or the order against is uploaded on the common portal. The final acknowledgement indicating the appeal shall be issued by the appellate authority, where the decision or the order appealed against is uploaded on the common portal. A final acknowledgement indicating the appeal number shall be issued by the authority or an officer authorized by him in this behalf in APL 02. The date of issue of the acknowledgement shall be considered the date of the filing of the appeal. Again, same thing. If the decision or the order is not uploaded within 7 days, then what will be the date of the filing of the appeal? अगर डिसीजन या ऑर्डर अपील जिसके अगेंस्ट में कर रहे हैं वो पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है एंड ही हैज फाइल्ड द मैनुअल अपील, देन whether he is required to submit the document within 7 days from the date of the filing. The final acknowledgement indicating the appeal number shall be issued in the APL 02. The date of issue of the provisional acknowledgement shall be considered the date of the filing of the appeal. Correct? So, if the document has been submitted within 7 days, then date of the provisional acknowledgement shall be considered the date of the filing of appeal. And if the document is submitted after the 7 days, then what will be the date of the filing of appeal? The date of the filing of the appeal will be the date of submission of that copy shall be considered. See, in the exam, there may be the practical problem in this case. See, here I can understand that two questions become important. One first question, that when the appeal can be filed manually instead of online. तो अगर कमिश्नर नोटिफाइड करते हैं तो, या ऑर्डर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो, देन what is the date of the filing of the appeal? Then you can say if it is online, then automatically there will be the final acknowledgement, right? A final acknowledgement indicating the appeal shall be issued immediately, and then the date will be the date of the filing of the appeal. And अगर ये ऑफलाइन है, मैनुअल है, तो क्या होगा? 7 दिन में डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे. अगर 7 दिन में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया तो अगेन दैट कॉपी, दैट प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट विल बी द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ अपील. बट अगर 7 दिन में नहीं किया, देन एक्चुअल डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ अपील. ठीक है. एप्लीकेशन टू बी ट्रीटेड एज अपील. Such application shall be dealt with by the appellate authority as if it is a file, if it were an appeal against the decision. There is no requirement to make the pre-deposit in case of the department appeal. Correct. Now, what is the process being followed by the appellate authority? The appellate authority has to follow the principle of natural justice. What is the principle of natural justice? That is opportunity of the being heard. Allowing the reasonable adjournment, not more than 3, permitting the additional ground of the appeal. So they will permit to add the additional ground if the omission of that ground from the ground of the appeal was not willful and is found reasonable. मतलब जो आपने ग्राउंड ऑफ अपील दिया है, दे विल अलाउ यू टू ऐड द एडिशनल ग्राउंड ऑफ द अपील ऑल्सो इफ इट इज नॉट विलफुल. मतलब फर्स्ट टाइम जो आपने ग्राउंड दिया था उसका ओमिशन आपने जानबूझकर नहीं किया है, एंड द ग्राउंड वाज रीजनेबल. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी? द अपीलेट अथॉरिटी कैन मेक फर्दर इंक्वायरी
and pass the order, that order in appeal, which may confirm, modify, or annul. What is the meaning of annul? Annul means cancelling the demand. They can confirm the demand, they can modify the demand, they can cancel at all, cancel the demand. However, the appellate authority shall not refer the case back to the adjudicating authority. ये बड़ा important point है. See, sometime you heard that High Court has remanded back. What is the meaning of the remanded back? That remanded back means the decision or the order against which the appeal has been filed and the higher authority giving the remand back decision. It means that particular authority will listen the again entire case again and then pass the fresh order. But point is, appellate authority has to conclude the decision. They cannot remand back. The appellate authority can also increase the regress of the order appealed against by enhancing any fees or penalty or fine in lieu of the confiscation of the goods. So they cannot refer back the adjudicating authority that case. The appellate authority can also increase the rigor of the order appealed against by enhancing the fees, penalty, fine in lieu of the confiscation or confiscating the goods of the greater value, reducing the amount of the refund or ITC. But whenever they are giving the whenever they are increasing the demand or reducing the benefit. Reducing the benefit means, suppose if there is an ITC available and appellate authority says no, this ITC is not available, or they are increasing the demand. So both are not favorable to the taxpayer. So in those cases, it is mandatory to give the reasonable opportunity of being heard. They cannot pass the order without giving the reasonable opportunity. If the appellate authority is of the opinion tax not paid, short paid, refunded, or where the ITC has been wrongly availed or utilized, no order requiring the appellant to pay the tax or ITC shall be passed unless the appellant is given the notice to so coach against the proposed order and order is passed within the time limit under section 73, 74 or 74A. The appellant may at any time before issuance of the said so cause notice or before issuance of the order, whichever is earlier, in respect of an appeal filed in APL 1 or APL 3, who will file the APL 1 and who will file the APL 3? Please confirm who will file the APL 1 and who will file the APL 3? So APL 1 would be by the taxpayer and APL 3 would be by the commissioner or by the department, obviously. Okay. Now, what is the W? W means withdrawal. This is also the very good facility. Suppose Mr. A against whom that order has been passed and he like to file the appeal. He has filed the appeal, but he feel that this document has been wrongly submitted. Or consultant like to file the appeal of Mr. A, but he has attached the document of Mr. B. That was problem. So once it is filed online, then the portal giving the facility that he can withdraw that appeal and he can file again fresh. The appellant may at any time before issuance of the said so cause notice or before issuance of the order, whichever is earlier, in respect of an appeal filed in APL 1 or APL 3, file an application for withdrawal of the said appeal by filing an application in APL 01 or 0W, 03W.
However, where the final acknowledgement has been issued, the withdrawal would be subject to the approval of appellate authority. And such application for withdrawal shall be decided by the appellate authority within 7 days of the filing of application. Such application for withdrawal shall be decided by the AA within 7 days. So they are fixing the time on the department also. Further, the fresh appeal filed by the appellant pursuant to the withdrawal shall be filed within the time limit specified in A or B, as the case may be. Further, any fresh appeal filed by the appellant pursuant to the withdrawal shall be filed within the time limit specified in the A and B. What is the A and B? That is, if the appeal filed, that is 3+1 or 6+1 that we have discussed above. ठीक है. Order shall be the speaking order. Speaking order we have discussed also in the demand and order chapter. Speaking order means shall state the point, fact of the case, etc. Everything is crystal clear. For determination the decision and the reason for the decision, the law provide an advisory time limit of 1 year. So it is not compulsory, it is advisory. Advisory means ideally it should be within this time limit. What is the 1 year? The date of the filing of the appeal for the appellate authority to decide the appeal. So appellate authority should decide the appeal within a period of 1 year. The period of the stay ordered by a court or tribunal shall be excluded. So जितना वो stay वाला time है by court or tribunal, that will be excluded in counting the time limit of 1 year. ठीक है. Now let's read the example. The adjudicating authority passed the order on 23rd January 2025 and it was communicated to the taxpayer on the same day. The taxpayer filed the appeal against the order with the appellate authority on 16th Feb. The appellate authority should decide the appeal by the 16th Feb 2026 where it is possible to do so. It is advisory time limit. The adjudicating authority passed the order on this date and it was communicated to the taxpayer on the same day. The taxpayer filed the appeal against the order on 16th Feb. The appeal proceeding before the appellate authority are stayed by the court order between 1st May to 30th June. So 2 months has been stayed. So the counting of 1 year would be exclude this period, the period of 61 days during which the stay was in operation will be excluded for the counting of 1 year within which the appellate authority should decide the appeal. Therefore, the appellate authority, as per the advisory time limit, can pass the order by 18th April. Okay, shall we proceed? On disposal of the appeal, the appellate authority shall communicate the order passed by it to the appellate, respondent, and to the adjudicating authority. On disposal of the appeal, the appellate authority shall communicate the order passed by it to the applicant, respondent, and adjudicating authority. Copy of the order passed by the appellate authority shall also be sent to the jurisdictional commissioner or the authority designated by him in this behalf, and the jurisdictional SGST, CGST, UTGST, or an authority designated by him in this behalf. Every order passed by the appellate authority shall be final and binding on the party unless the dispute is taken to the higher appellate forum. Now, appointment of the appellate authority, that is again important. See, normally we called as appellate authority as commissioner appeal. In the commissioner appeal, it would be the joint commissioner or it would be the commissioner, depending upon the fact that
who is the adjudicating authority? If the decision or order जिसके अगेंस्ट में हम अपील फाइल करें टू द अपीलेट अथॉरिटी, दैट डिसीजन ऑर्डर इज पास्ड बाय द एडीसी, एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, एडीसी और जेसी, एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, then the appeal of appellate authority would be heard by the commissioner. See, appeal to the appellate authority is commissioner appeal only, but in the commissioner appeal I can say the appellate authority will be the commissioner if the order passed by the ADC or JC. Now if the order passed by the officer below the rank of the ADC or JC, that means if it is deputy commissioner, assistant commissioner, superintendent, in that case the appeal would be heard by the officer not below the rank of the joint commissioner. So it means अगर जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया तो कौन हर्ड करेंगे? कमिश्नर. और अगर बिलो द जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया तो कौन हर्ड करेंगे? कौन हियर करेंगे? जॉइंट कमिश्नर. इट कैन बी हर्ड बाय द एडिशनल कमिश्नर आल्सो, क्योंकि एडिशनल कमिश्नर इज अबव द रैंक ऑफ द जॉइंट कमिश्नर. Now the summary, you can see the summary. I think we have covered everything. Just see appeal to the appellate authority, correct? The commissioner may direct an officer subordinate to him apply to the appellate authority to determine the point relating to the legality and propriety of an order of adjudicating authority. Time limit 6+1. Form is APL 03. And any person aggrieved by the decision by an C, point to be noted. They are saying any person. It means it is not necessary that it should be the registered person. It is not necessary that appeal can be filed only by the registered person. It can be any person. Okay. Whomsoever is aggrieved by the decision or order passed by the adjudicating authority under the GST law. Time limit 3+1 APL 1. Pre-deposit is mandatory. And in this department appeal, what is the pre-deposit? In case of the department appeal, what is the pre-deposit? Whether it is mandatory or not. If the appeal to be filed by the department, whether pre-deposit is mandatory or not, answer is no pre-deposit in case of the department appeal. Correct. The appellate authority will give the appellant a chance to be heard. The AA may allow the appellant during the hearing to add any ground of the appeal which was missed. What is the maximum time of the adjournment? 3 adjournment. What is the power? Duty, he can confirm the demand, he can modify the demand, or he can annul the demand. But what he cannot do? वो क्या नहीं कर सकता? He cannot remand back. He cannot remand back. That particular important point, he cannot remand back. And if he is increasing the liability or decreasing the benefit, then what is the additional point which appellate authority should keep in mind? Before SCN, they should give the opportunity of being heard. They should give the opportunity of being heard. That's it. Okay. The power of the revisional authority. Now section 107 is completed. Now we are in the section 108. What is the section 108? The GST law provides the mechanism
of revision by the revisional authority. This authority is different of the order passed by the subordinate officer. ठीक है. The RA may, on his own motion or upon information received by him or on request from the GST commissioner, call for and examine the record of any proceeding. सी रिविजनल अथॉरिटी या तो खुद या किस इंफॉर्मेशन जो कि कमिश्नर ने रिक्वेस्ट की है क्या कर सकते हैं वो रिकॉर्ड जो भी रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग दे कैन एग्जामिन. Here the record include all the record relating to the proceeding under CGST available at the time of examination. On examination of the case or record, if RA is of the opinion that see who can make a request to the RA, can taxpayer make a request to the RA? See, read the point. This also sometime come exam in the exams or in practical life also. Can application to be sent by the taxpayer for the reviewing or revision? Read the line. RA may on his own motion या तो खुद अपनी इच्छा से या फिर इंफॉर्मेशन किससे मिली है received by him or on the request from the CGST or SGST commissioner call for examine. मतलब या तो डिपार्टमेंट वाले ने रिक्वेस्ट की है या वो अपनी खुद की इच्छा से जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिली है उसके बेस पर. On examination of the case or record, if RA is of the view that decision passed under the GST law by any officer is erroneous, insofar it is prejudicial to the interest of the revenue. So insofar मतलब वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि ये ऑर्डर इरोनियस है and is illegal or improper and has not taken into account the material fact. Which material fact? Which is available at the time of not at the time of revision, at the time of issuance of order. आज नहीं, जब ऑर्डर इश्यू किया था तब. In consequence of an observation by the CAG. So अब देखिए हैज नॉट टेकन इनटू अकाउंट ऑफ द मैटेरियल फैक्ट वेदर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ऑर्डर और नॉट. तो मतलब क्या हुआ वो एडिशनल मैटेरियल फैक्ट को भी ऐड कर सकते हैं. सपोज कोई फैक्ट ऐसा आया जो ऑर्डर के टाइम पे नहीं था पर बाद में अवेलेबल हो गया, देन दे कैन आल्सो डू द रिवीजन या बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ CAG. He may, if necessary, stay the operation of the decision or order for such period as he deem fit. Thereafter, the revisional authority, ठीक है, after making such further inquiry or as the case may be necessary, pass the order as he think just and proper, including enhancing, modifying or annulling the demand or order. Here the decision include information given by any officer lower in the rank of RA, obviously. Along with the order, the RA shall issue a summary of the order clearly indicating the final demand. If the RA decide to pass an order which is likely to affect the person adversely, he shall issue the notice on the person to give the reasonable opportunity of the being heard. What is the purpose of the notice? What is the purpose of the notice? Simply purpose of the notice is natural justice. क्योंकि जब भी कभी डिमांड मतलब एडवर्सली अफेक्ट होगी, एडवर्सली अफेक्ट मतलब या तो उसकी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दिया या उसकी बेनिफिट को डिक्रीज कर दिया, दोनों में से कोई भी एक. Every revision order shall, subject to further appeal to the tribunal, High Court or Supreme Court, be final and binding on the parties. ठीक है. See, every revision order subject to the further appeal to the tribunal. It means against the revision order, can you file the commissioner appeal? Against the revision order, can you file the commissioner appeal? Answer is no. Appeal would be lies to the tribunal only. या high court या supreme court, well that is the level.
It means RA would be having considered equivalent to the commissioner appellate authority. Now, the power of the revision is subject to the condition that the non-appealable order cannot be revised. So there are some order which cannot be appealed. So like we will read section 121, we will read under the heading number 15. ठीक है, बट कुछ ऑर्डर अपीलेबल नहीं होते, उस ऑर्डर की आप रिवीजन नहीं कर सकते, मतलब उस ऑर्डर का रिवीजन नहीं कर सकते. RA shall not exercise the power of the revision if the order to be revised has been subject to the appeal before the appellate authority या ट्राइब्यूनल या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट. तो ऑलरेडी वो अपीलेबल है ऑर्डर. एंड पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है. क्या टाइम लिमिट एक्सक्लूड होगी, इंक्लूड होगी? पीरियड ऑफ 6 मंथ हैज नॉट येट एक्सपायर्ड. 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर. तो 6 महीने का टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं होना चाहिए. एंड मोर देन 3 years have been expired after the passing the decision. मतलब RA shall not exercise. कब एक्सरसाइज नहीं करेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन टिल द पीरियड ऑफ 6 month. एक्सरसाइज नहीं करेगा मतलब 6 महीना कम से कम एक्सपायर हो जाना चाहिए, और 3 साल से ज्यादा भी वो अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता. तो इफेक्टिवली more than 6 to 3 years would be the time of revisional authority. The order has already been taken for the revision at an earlier stage, or order sought to be revised is itself a revision order. मतलब revision order का revision नहीं किया जा सकता. RA may still pass an order or any point which has not been raised and decided in an appeal before the appellate authority. Tribunal, High Court, Supreme Court before the expiry of 1 year from the date of the decision, from the date of the order in such appeal, and before the expiry of the 3 years from the date of the initial order. तो may still pass an order on any point. See, यहां पर बात ऑर्डर की, ऑल टुगेदर ऑर्डर के सभी पॉइंट की बात नहीं कर रहा. अब ऑर्डर में 5 पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट जो रेज ही नहीं किया गया था या डिसाइड नहीं किया, जिसको रेज नहीं किया अपील में, ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिसाइड नहीं किया बाय द हायर अथॉरिटी, देन बिफोर एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इन दैट अपील, ठीक है, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द इनिशियल ऑर्डर विच एवर इज लेटर. तो क्या कर सकते हैं? स्टिल पास एन ऑर्डर. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक हुआ ओरिजिनल ऑर्डर, उससे कितना टाइम? 3 साल. और जो ऑर्डर अपीलेट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, उससे कितना टाइम? 1 month, 1 year, विच एवर इज लेटर. तब तक वो ऑर्डर पास कर सकते. ठीक है, एक बार एग्जांपल रीड कर लेते. ए टैक्स पेयर इज सर्व्ड विद एन एडजुडिकेशन ऑर्डर ऑन 25 मई 2025. आरए कैन रिवाइज द ऑर्डर ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 26 नवंबर एंड 25 मई. 26 नवंबर 2025 एंड 25 मई 2028, इस पीरियड के बीच में दे कैन डू द रिवीजन. ABC Private Limited manufactures product P and Q. The company avail the benefit of exemption notification in respect of the product P and pay tax on product Q at the rate of 12%. ठीक है, SCN was issued to the company for that product P was not eligible for exemption and product Q on which they are paying 12%, but actually the tax was 18%. Adjudicating authority concluded that rate of the taxes in respect of the product Q was not correct, but the exemption was being availed wrongly. As a result, an order confirming the demand of rupees 10 lakh was passed by the adjudicating authority on 15th Jan. Correct? The company filed an appeal against the order before AA on 16th Feb 2025. The appellate authority passed the order in favor of the company in respect of the product P on 31st October. Now the RA, Divisional Authority, can pass the revised order
in respect of tax rate on product Q before 31st October, that is 1 year, or 15th Jan, that is 2020, that is 3 years, whichever is later. RA can pass the revised order by 15th January 28. ठीक है. Again, period to be excluded in computing the limitation. एक सेकेंड. सो एक मिनट गौर कीजिएगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्यू वाज करेक्ट, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कौन सा पॉइंट नहीं उठाया था? प्रोडक्ट क्यू का पॉइंट नहीं उठाया था, राइट? तो देयरफॉर द रिविजनल अथॉरिटी कैन स्टिल पास द ऑर्डर ऑन द प्रोडक्ट क्यू. यही वाला पॉइंट में रीड किया था ना. एनी पॉइंट विच हैज नॉट बीन रेज्ड और डिसाइडेड इन अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी. तो if the decision or the order sought to be revised involve an issue on which the tribunal or the high court has given its decision on in some other proceeding. ये बोल्ड किया हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है. सेम प्रोसीडिंग नहीं, सम अदर प्रोसीडिंग. if the decision or the order sought to be revised involve an issue on which the tribunal or the high court has given its decision in some other proceeding and appeal to the further level. अपीलेट ट्रिब्यूनल है तो किसको फर्दर अपील करेंगे? हाई कोर्ट को. और अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो किसके अगेंस्ट में करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को. अगेंस्ट दैट डिसीजन इज पेंडिंग the period spent between the date of the decision by the lower forum and date of the decision by the higher forum will be excluded in computing the period of the limitation of 3 years. सी ये बड़ा बड़ा मतलब बहुत ब्रॉडर इंपैक्ट वाला पॉइंट है. क्या कहते हैं? इन सम अदर प्रोसीडिंग. तो पूरी इंडिया की बात करूं तो किसी भी प्रोसीडिंग के मतलब उससे रिलेटेड अगर कोई मैटर है, वो सेम मैटर है बट और कोई प्रोसीडिंग है, इसका मतलब लेट्स से मैटर इज बीइंग दिल्ली हाई कोर्ट, सो दिल्ली डिवीजन अथॉरिटी है, और लेट्स से कि झारखंड में कोई मैटर चल रहा है, तो अगर उस डिसीजन के बीच में मान लो 2 साल लगा तो दिस 2 year वुड बी एक्सक्लूडेड इन काउंटिंग द 3 years. तो कितना बड़ा टाइम ब्रैकेट हो गया? द 3 year वुड बी द टाइम लिमिट, बट 3 year कैन बी इनहांस्ड अगर कोई डिसीजन सिमिलर मैटर से रिलेटेड, सिमिलर मैटर है कोई बट कोई अदर प्रोसीडिंग है, उसमें जो लोअर अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया और हायर अथॉरिटी ने पास किया, उसके बीच का टाइम लिमिट विल बी एक्सक्लूडेड इन 3 years. हाँ, क्यू वाज डिस आयुष, एक मिनट वापस ऊपर जाता हूं मैं. सी, क्यू डिसाइडेड करेक्ट बाय whom? बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या बाय अपीलेट अथॉरिटी? बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, करेक्ट. और यहां पर किसकी बात हो रही है? आरए में स्टिल पास द ऑर्ड. ये तो अलग पॉइंट हो गया, ठीक है. एक मिनट रुकिएगा, जस्ट एक मिनट रुकिएगा. अभी हमने एक एक चीज पढ़ी थी ना. वेट वेट, इफ द आरएडी सेट एन ऑर्डर फेड द सेल के दी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी एवरी ऑर्डर. एक मिनट रुकिएगा.
See, order sought to be revised has been subject to the appeal before the appellate authority tribunal या सुप्रीम कोर्ट. तो जो अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट में अपील की गई वो प्रोडक्ट पी की थी या प्रोडक्ट क्यू की थी? वो प्रोडक्ट पी की थी या प्रोडक्ट क्यू की थी? द आंसर इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंक्लूडेड दैट प्रोडक्ट क्यू वाज करेक्ट. तो देयरफॉर द टैक्स रेट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. तो वो जो अपील की गई वो किसके अगेंस्ट में की गई? वो प्रोडक्ट क्यू के अगेंस्ट में नहीं थी, प्रोडक्ट पी के अगेंस्ट में थी. तो प्रोडक्ट क्यू वाज नॉट एट ऑल लिसन. तो प्रोडक्ट क्यू इज ओपन एंडेड. ये लिखा है ना कि आरए में स्टिल पास एन ऑर्डर ऑन एनी पॉइंट विच हैज नॉट बीन रेज्ड और डिसाइडेड बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, नॉट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. अपीलेट अथॉरिटी के सामने रेज नहीं हुआ या डिसाइड नहीं हुआ. तो कौन सा पॉइंट रेज नहीं हुआ? ऑब्वियसली जिसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज ओके. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज ओके विद द प्रोडक्ट क्यू. तो ये पॉइंट अपीलेट अथॉरिटी में नहीं जाएगा. ये पॉइंट अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका. तो देयरफॉर द रिविजनल अथॉरिटी कैन कम इनटू द पिक्चर एंड प्रोडक्ट क्यू के ऊपर वो डिमांड या कुछ भी कह सकते हैं. प्रोडक्ट क्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ द टैक्स ऑफ द प्रोडक्ट क्यू. क्लियर है ना? इज इट ओके? सो मैं ये कह सकता हूं कि एक सेकेंड, एक मिनट और आते हैं ऊपर, ठीक है? टाइम लिमिट में आते हैं. ओके. तो जिस मैटर पर, मतलब आई कैन से द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिस मैटर को डिसाइड कर चुकी है, दैट पॉइंट कैन बी अगेन टेकन बाय द डिविजनल अथॉरिटी. ठीक है? तो ये हमारा हो गया पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड, राइट? सो व्हेन द इश्यूएंस ऑफ द रिवीजन ऑर्डर, सी अब पहला पॉइंट तो ये बहुत बड़ा वाइडर पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट नॉर्मल हो गया जो कि हमने पीछे भी रीड किया था कि अगर कोई स्टे मिल जाती है बाय द कोर्ट या ट्रिब्यूनल, then the period of the stay will be excluded in computing the period on the limitation of 3 years. एक छोटा सा एग्जांपल रीड कर लेते हैं. द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी passed the order on 23rd Jan and it was communicated to the taxpayer on the same day. RA called for the record of the proceeding on 1st August after expiry of the 6 month and started the examining the same. The revisional order to be passed by the revision authority is stay by the order of the High Court for the period between this date. तो ये अगेन 61 डेज का एक्सक्लूजन हो गया. तो 61 डेज will be excluded in counting the period of 3 years within which the RA should pass the revision order. Therefore, the RA can pass the order by 25th March 2028. क्लियर है? ठीक है. The provision related to the revision empower the superior authority to revise the order or the decision passed by the subordinate officer. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक बड़ा पॉइंट जो ध्यान में रखना चाहिए हमें, नॉर्मल जो टाइम लिमिट है वो जो ऑर्डर पास करने की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो जो भी 3 ईयर 6 मंथ वट एवर 42 मंथ हमने पहले रीड की थी, उसके बाद में 1 ईयर का टाइम लिमिट, ठीक है, वो 6 मंथ और एक्सटेंड हो सकता है. उसके बाद भी 3 साल तक इट इज स्टिल रिविजनल अथॉरिटी हैज द पावर. द प्रोविजंस रिलेटेड टू द रिविजन पावर, the superior authority to revise the order or the decision passed by their subordinate officer which are found to be improper. एक मिनट, वापस एक इंपॉर्टेंट चीज वापस ऊपर आता हूं. एक एक चीज बताना चाहता हूं. अब सपोज करो किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर ही पास नहीं हुआ, ठीक है? तो जब तक
फॉर एग्जाम्पल वो जो टाइम लिमिट है 73 की या 74 की या 74A की, वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है एंड ऑर्डर पास नहीं हुआ। तो जब उसका कोई पॉइंट पर ऑर्डर पास नहीं हुआ, देन दैट पॉइंट कैन नॉट बी टेकन बाय द रिविजनल अथॉरिटी, क्योंकि बेसिक चीज क्या है, ऑर्डर तो होना चाहिए ना, मतलब कोई ऑर्डर तो होना चाहिए, उसी का तो रिवीजन करेंगे। तो इट मींस देयर हैज टू बी सम ऑर्डर जिसका रिवीजन का बात चल रहा है, और उस ऑर्डर में जो पॉइंट अपीलेट अथॉरिटी ने डिसाइड कर लिया वो उसके पावर से एक्सक्लूड हो जाएगा। जिस पॉइंट को अपीलेट अथॉरिटी ने डिसाइड नहीं किया, वो पॉइंट रिवीजन अथॉरिटी के पास में आ जाएगा। A also has the power to annul, enhance, etc., as discussed. In order to avoid any duplication of the proceeding, an order which is subject to the appeal cannot be revised. However, the revisional order can be passed on the points that are not raised or decided in an appeal. Accordingly, the law provides for extension of time limit for revising the order that are subject matter of an appeal. Extension to be prescribed limitation is also applies where the order has been stayed. The revision proceeding can only be taken only with respect to an order, and a revision order cannot be revised. Okay. So let's take a small break of 10 minutes and then we will resume again and start with the point number D. Ashok ji, break start कर दीजिए सर। अशोक सर।
We were talking about the revisional authority. Now the officers authorized as revisional authority. Again, the same concept which we have talked about. So please, reading this. So what was the two level? If the order or in the appellate authority, I am asking if the order or decision is passed by which officer, then it will be heard by the कमिश्नर अपील. अगर डिसीजन या ऑर्डर किसने पास किया है तो वो ऑर्डर कमिश्नर हर्ड करेंगे. अपीलेट ऑथोरिटी आई एम टॉकिंग अबाउट. दैट विल बी बाय द एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर. ठीक है. तो सेम पॉइंट यहां पर, अगर डिसीजन या ऑर्डर पास किया गया है एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर ने, ठीक है, देन इन दैट केस इट विल बी हर्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर. ठीक है. सो ये जो डेजिग्नेशन है ना, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, दीज डेजिग्नेशन आर अंडर सीबीआईसी, बट द सेम डेजिग्नेशन विल नॉट बी देयर इन द एसजीएसटी. इट विल नॉट बी देयर. तो स्टेट के जो डेजिग्नेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, फिर वो इक्विवेलेंट रैंक आइडेंटिफाई की जाती है. बट लाइक इन द सीबीएसई क्या होता है, सीबीएसई क्या होता है, जैसे सुपरिटेंडेंट है, उनके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर है, उनके ऊपर जॉइंट कमिश्नर है, उनके ऊपर एडिशनल कमिश्नर है, देन कमिश्नर, देन प्रिंसिपल कमिश्नर. तो इफ द डिसीजन या ऑर्डर पास बाय द एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर है तो रिविजनल अथॉरिटी कौन होगा, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर. और अगर पास बाय द डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट, देन एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर विल बी द रिविजनल अथॉरिटी. ठीक है. अब हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल की. तो रिविजनल अथॉरिटी हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल की. The constitution of the appellate tribunal and the benches thereof. Tribunal is the second level of appeal. ठीक है. Where the appeal can be filed against the order in appeal passed by the AA or order in revision passed by the RA by any person aggrieved by such an order in appeal or order in revision. The government shall, on the recommendation of the council by notification, establish with effect from such date as may be specified therein an appellate tribunal as GST appellate tribunal for hearing the appeal against the order passed by the appellate authority या revisional authority. मैं कौन से दो ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकता हूं ट्रिब्यूनल में? या तो अपीलेट अथॉरिटी ने जो पास की है, कमिश्नर अपील ने, या रिविजनल अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया उसकी अपील किसके सामने होगी? अपीलेट ट्रिब्यूनल में. For conducting an examination or adjudicating the case referred to in section 171(2). 171(2) क्या है? 171(2) एक एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजन है. क्या होता है एंटी प्रॉफिटरिंग? एंटी प्रॉफिटरिंग का मतलब होता है कि अगर कोई चेंज इन द टैक्स रेट है, अगर कोई, जब भी ट्रांजिशन पीरियड है, तो जीएसटी में दो ट्रांजिशन पीरियड होते हैं. एक ट्रांजिशन पीरियड प्री जीएसटी टू जीएसटी था, और दूसरा ट्रांजिशन पीरियड जब भी टैक्स रेट चेंज होती है. इन दो ट्रांजिशन के केस में अगर कोई बेनिफिट है, किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो बेनिफिट पास ऑन करना पड़ता है टैक्स पेयर को, रिसिपिएंट को पास ऑन करना पड़ता है. मतलब लेट्स से कि अगर कोई टैक्स रेट पहले 18 था, अब 12 हो गया. जैसे अभी 22 सितंबर 2025 को बहुत सारी रेट चेंज हुई थी, राइट? तो अगर कोई टैक्स का रेट बेनिफिट डिक्रीज हुआ है तो उसका बेनिफिट उसे पास ऑन करना पड़ेगा टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. दूसरा, अगर कोई आईटीसी इंक्रीज हो गई तो वो बेनिफिट उसे पास ऑन करना पड़ेगा. तो दीज आर द टू एडिशनल पॉइंट. जब भी ट्रांजिशन होगा, या तो कोई टैक्स का रेट डिक्रीज हो गया या कोई एडिशनल आईटीसी अक्रू होने लग गई, किसको? सप्लायर को. तो वो सप्लायर को वो टैक्स का बेनिफिट उसे पास ऑन करना पड़ेगा टू द रिसिपिएंट. अगर वो ऐसा नहीं करता है, then what happened? In that case, this is case of
anti-profiteering. So, adjudicating the case referred to in section 71, 71, so notified under the said subsection. The jurisdiction, power and authority. अब क्या है, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में दो तरह की बेंच है, एक स्टेट बेंच और एक प्रिंसिपल बेंच. पहले स्टेट बेंच और एरिया बेंच, प्रिंसिपल एंड नेशनल बेंच, ऐसे करके कोई कॉन्सेप्ट हुआ करता था जीएसटी में अपीलेट ट्रिब्यूनल में जब लॉ बना था. बट बाद में इसको चेंज किया. अब क्या है, अब दो ही कॉन्सेप्ट है, एक तो स्टेट बेंच का और दूसरा प्रिंसिपल बेंच का. गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट द प्रिंसिपल बेंच एट न्यू दिल्ली. मतलब जो प्रिंसिपल बेंच होगी ना, वो सिर्फ न्यू दिल्ली में होगी और कहीं नहीं होगी. ठीक है. एंड विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर सेंटर एंड टेक्निकल मेंबर स्टेट. अब देखो, इस कॉन्स्टिट्यूशन पर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. सी, आज भी क्या ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश है? अब तो हो गई, शॉर्टली इट विल स्टार्ट द एडजुडिकेशन आल्सो, मतलब केस हियरिंग करेगी. लेकिन इतना टाइम क्यों लगा? सी, ऑलमोस्ट देयर इज एन 8 year, मोर देन 8 year has been expired, and till the date the tribunal is not fully operational. Why? The reason was just its constitution. मद्रास हाई कोर्ट में इसके कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया था. क्यों चैलेंज किया था? क्योंकि पहले टेक्निकल मेंबर ज्यादा थे और जुडिशियल मेंबर कम थे. मतलब पहले एक जुडिशियल, कॉन्स्टिट्यूशन क्या था ट्रिब्यूनल का? कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिब्यूनल का था एक जुडिशियल मेंबर, दो टेक्निकल मेंबर, तीन लोग हुआ करते थे. देन इट वाज चैलेंज कि दैट जुडिशियल मेंबर कैन नॉट बी लोअर देन द टेक्निकल मेंबर. टेक्निकल मेंबर, या दूसरे बात बोलो कि टेक्निकल मेंबर जुडिशियल से ज्यादा नहीं हो सकते किसी भी ट्रिब्यूनल में. एंड दैट वाज बीइंग चैलेंज्ड. एंड फाइनली व्हाट दे हैव डिड कि प्रिंसिपल बेंच में दो होंगे जुडिशियल मेंबर, प्रेसिडेंट एंड जुडिशियल मेंबर एक. तो प्रिंसिपल विल आल्सो बी द जुडिशियल मेंबर. तो दो जजेस हो गए एंड दो ही टेक्निकल मेंबर हो गए, एक सेंटर का एक स्टेट का. तो बाय दैट दे हैव मैच्ड एंड फाइनली इट इज बीइंग अप्रूव्ड. On the request of the state, the government by notification constitute the such number of state benches at such places within such jurisdiction as may be recommended by the council, which shall consist of the two judicial member, one technical member and one technical member center and state. Clear? अब अगर मैं बात करूं, आई होप दिस इज क्लियर. प्रिंसिपल बेंच में क्या हो गया, एक प्रेसिडेंट हो गया, एक जुडिशियल मेंबर हो गया और एक टेक्निकल मेंबर सेंटर हो गए, एक टेक्निकल मेंबर स्टेट हो गए. सेम स्टेट बेंच में दो जुडिशियल मेंबर्स हो गए और एक टेक्निकल मेंबर सेंटर और एक टेक्निकल मेंबर स्टेट. एंड बाय दिस व्हाट हैपन कि उन्होंने, जो मेन प्रॉब्लम था जो मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ था कि जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर दोनों को अब इक्वल कर दिया, बाय विच दैट पर्टिकुलर मतलब जो चैलेंज था वो प्रोविजन को सेटल किया. जुरिस्डिक्शन क्या है? प्रिंसिपल बेंच and the state bench shall hear the appeal against the order passed by the appellate authority or the revisional authority. मतलब दोनों का ही जो हियरिंग है, हियरिंग वुड बी ऑन द डिसीजन और ऑर्डर पास्ड बाय द रिवीजन अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी. तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है पीओएस. अगर कोई ऑर्डर जिसमें वन ऑफ द पॉइंट is pertaining to the place of supply, तो place of supply matter जो है shall be heard only by the principal bench, not by the state benches. Then 171 subsection 2 जो anti profiteering का shall be heard only by the principal bench. Government on the recommendation of the council notify other cases or class of cases which shall be heard only by the principal bench. तो तीन चेंज हो गए मैटर कि एक तो प्रिंसिपल बेंच क्या होगा, सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई से मैटर से रिलेटेड मैटर सुनेंगे. दूसरा 171(2) से रिलेटेड मैटर सुनेंगे और तीसरा जो नोटिफाई होगा उस टाइप के मैटर सुनेंगे. इसके अलावा जो भी मैटर है दैट विल बी हर्ड बाय द स्टेट बेंच. क्या है ट्रांसफर ऑफ केस? सब्जेक्ट टू द अबव जुरिस्डिक्शन गिवन इन द 1095, द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय ए जनरल ऑर्डर
या स्पेशल ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल among the benches, ठीक है, एंड मे ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन बेंच टू द अनदर बेंच, ठीक है. VP for state benches, the senior most judicial member within the state bench, as may be notified, shall act as a vice president for such state benches and shall exercise the power of the president as may be prescribed, but for all other purpose he will be considered as a member only. मतलब अदरवाइज वो मेंबर है, बट वो सीनियर मोस्ट अगर जुडिशियल मेंबर है तो वाइस प्रेसिडेंट भी होगा स्टेट बेंच के लिए. सिंगल मेंबर बेंच, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज दैट? अपील वेयर द टैक्स और ITC इन्वॉल्व or the amount of the fine, fee or penalty determined in any order does not exceed 50 lakhs and which does not involve any question of law. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और 50 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है. इन दैट केस with the approval of the president and subject to the condition as may be prescribed be heard only by the single member. मतलब एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर. अदरवाइज कंपोजिशन क्या है? अदरवाइज तो कंपोजिशन दो जुडिशियल मेंबर दो टेक्निकल मेंबर है, लेकिन अगर 50 लाख तक का मैटर है इट कैन बी हर्ड ओनली बाय द वन मेंबर बेंच, ठीक है. शैल बी हर्ड टुगेदर, सॉरी, अगर तब तक का मैटर है तो कोई एक सिंगल मेंबर भी सुन सकता है, ठीक है. इसके अलावा शैल बी हर्ड बाय द वन जुडिशियल मेंबर एंड वन टेक्निकल मेंबर. Accordingly, the cases can be heard by the bench consist of single member. सिंगल मेंबर मतलब ओनली वन मेंबर, ऐसा नहीं 1+1 नहीं, ओनली वन. टोटल 4 मेंबर है. नॉर्मली 1+1 का हियरिंग हो सकता है, बट इसमें भी एक रिलैक्सेशन दी है कि अगर टैक्स का कंपोनेंट या ITC का कंपोनेंट 50 से ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, तो वो मैटर सिंगल पर्सन मतलब इधर टेक्निकल मेंबर कोई भी एक पर्सन मैटर सुन सकते हैं. Majority rule in case of the difference of opinion. If after hearing the case, the member differ in their opinion, then they shall state the point which they differ, and the president shall refer such case for hearing. Where the appeal was originally heard by the state bench member, then they can president refer the case for hearing to another member of the state bench within that state, where no such other state bench is available than to the member of the state bench in another state. पहले तो क्या करेंगे, एक स्टेट में मल्टीपल स्टेट बेंच हो सकती है, एक स्टेट में मल्टीपल स्टेट बेंच हो सकती है, तो एक स्टेट बेंच से दूसरे स्टेट बेंच को विद इन दैट स्टेट ट्रांसफर कर सकते हैं अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या अगर मान लो उसमें कोई दूसरी स्टेट बेंच है ही नहीं, इन दैट केस दे कैन ट्रांसफर टू द अनदर स्टेट. अब अगर अपील हर्ड की है बाय द मेंबर ऑफ द प्रिंसिपल बेंच, then they can transfer to the another member from the principal bench, or where no such other member is available to the member of the state bench also. So president can decide and accordingly they can transfer the case, and such point or point shall be decided according to the majority, including opinion of the member who first heard the case. Transfer of the member for administrative efficiency, the government in consultation with the president for the administrative efficiency transfer the members from one bench to the another bench. Technical member अगर स्टेट का है तो ऑफ स्टेट बेंच में बी ट्रांसफर टू द स्टेट बेंच ओनली विद इन द सेम स्टेट. ये कंडीशन उन्होंने लॉजिकली एस्टेब्लिश की, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, लेट से मैं एक्स स्टेट से बिलोंग करता हूं और मुझे स्टेट बेंच में मेंबर बना दिया, बट वो स्टेट वाई है, मैं हमेशा क्या करूंगा, कोशिश करूंगा मैं अपने स्टेट एक्स में चला जाऊं. सो देयरफॉर दे आर सेइंग कि अगर मैं टेक्निकल मेंबर हूं स्टेट वाई में, तो आई कैन रिमेन ओनली विद इन स्टेट वाई, बट वन फ्रॉम वन बेंच टू द अनदर बेंच आई कैन बी ट्रांसफर. जिसमें मेरा ओरिजिनल अपॉइंटमेंट हुआ बस वहीं पे, इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट. डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू रेंडर प्रोसीडिंग इनवैलिड. नो एक्ट और प्रोसीडिंग of the tribunal shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy
or defect in the constitution of tribunal. कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग ट्रिब्यूनल की क्वेश्चन मार्क नहीं होगी या इनवैलिड नहीं होगी मेयरली इस ग्राउंड पर कि कोई वैकेंसी थी या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट था. द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ द सर्विस एटसेट्रा शैल बी एज पर सेक्शन 1110, जिसका रेफरेंस यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो सभी क्या है, वो सारे मतलब रूल्स रेगुलेशन और उसके मतलब क्या क्वालिफिकेशन होगी एटसेट्रा दैट हैज बीन गिवन, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. ठीक है शायद, आई थिंक इट इज नॉट बीन गिवन, बट अगर दिया रहेगा तो वी विल डिस्कस. नाउ प्रोसीजर क्या है? 111 appellate tribunal shall not be bound by the procedure laid down in the CPC, Code of Civil Procedure. ठीक है. However, it shall be guided by the principle of natural justice and have the same power, shall have the power to regulate its own process. The appellate tribunal have the same power as are vested in the civil court and code of civil procedure while trying a suit in the respect of the following matter: summoning and enforcing the attendance of any person, examining the oath, requiring the discovery or production of the document, receiving the evidence on affidavit subject to 123 and 124 of Indian Evidence Act, requesting any public record or document or a copy of the such record or document from any office, issuing commission for the examination of witness or document, dismissing the representation for default or deciding it ex parte, setting aside any order of the dismissal of any representation of the default or any order passed by it ex parte, any other matter which may be prescribed. Order of the tribunal may be enforced in the same manner as it was the decree by the court. The appellate tribunal can send for execution of its order to the court within its local limit of whose jurisdiction. In case order against the company, तो क्या होगा? The registered office of the company जिस jurisdiction में situated है उस कोर्ट को वो ऑर्डर फॉरवर्ड किया जा सकता फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. अगर कंपनी के अलावा कोई पर्सन है जहां पे वो वॉलंटरली रिसाइड करता रहता है या फिर कोई बिजनेस या पर्सनल वर्क करता है, इन दैट केस उस जुरिस्डिक्शन में जो भी लोकल कोर्ट है उसको रिक्वेस्ट किया जा सकता है बाय द अपीलेट अथॉरिटी. All proceeding before the appellate tribunal shall be deemed to be the judicial proceeding as per section 193 and 228, and for the purpose of 196 of the IPC. The appellate tribunal shall be deemed to be the civil court for the purpose of 195 of the CRPC. तो ये कुछ एक प्रोविजन है जो उससे रिलेटेड है, मतलब CRPC CVC. और वी ऑल नो दैट IPC हैज बीन रिप्लेस्ड विद द भारतीय न्याय संहिता, CRPC नागरिक सुरक्षा संहिता, and Indian Evidence Act has been replaced with the भारतीय साक्ष्य अधिनियम. अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल. ठीक है. any person aggrieved by the order passed by the, what is the meaning of double A and what is the meaning of RA? एक बार बताना मुझे, what is the meaning of double A and what is the meaning of RA?
So double A means appellate authority and RA means revision authority. उनके ऑर्डर्स एग्रीड है तो हम अपील कर सकते हैं appellate tribunal. What is the time limit? The time limit to file the appeal is 3 months from the date on which the order to be appealed is communicated, or the date as may be notified by the government on the recommendation of the council for filing the appeal before the appellate tribunal. ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा because we all know the tribunal is not yet functional. So if the order is being passed by the appellate authority, let's say in 2021, 1920, then what will happen? क्योंकि 3 महीने तो एक्सपायर हो गए, तो in that case what they are saying कि the date as may be notified by the government and whichever is later. अब इस डेट के काम में क्या है, that we will discuss in the statutory updates. ठीक है, the tribunal can condone the delay of up to 3 months beyond the specific time of 3 months. मतलब 3 plus 3 total 6 months. Form for filing the appeal. It will be the ITL 05 along with the relevant document electronically and provisionally acknowledged shall be issued immediately. An appeal to the tribunal may be filed manually along with the relevant document only if the registrar allow the same by issuing a special order as general order, subject to such condition restriction as may be specified. Power of the tribunal to refuse to admit an appeal. Appellate tribunal can refuse to admit an appeal if tax or ITC involved. सी, अपीलेट ट्रिब्यूनल का पावर है किसी भी अपील को वो रिफ्यूज कर सकते हैं कब? अगर आपका अमाउंट ऑफ टैक्स या आईटीसी या डिफरेंस इन टैक्स और आईटीसी और फाइन फी पेनल्टी डज नॉट एक्सीड 50,000. तो 50,000 के बिलो के मैटर को आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं. Memorandum of the cross objection. The law also provide for filing the cross objections by the respondent against such order, such part of the order against which the respondent may initially not have chosen to file an appeal. क्या होता है memorandum of cross objection? The law also provide filing of the cross objection by the respondent. मतलब सपोज अपील एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर था, उसके अगेंस्ट में अपील की, अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आया मिस्टर ए के फेवर में. नाउ डिपार्टमेंट हैज फाइल्ड द अपील. तो क्रॉस मेमोरेंडम क्या हुआ? क्रॉस ऑब्जेक्शन मतलब क्या हुआ? ए से पूछा जाएगा आपका क्या ऑब्जेक्शन है इस अपील में जो डिपार्टमेंट ने की है, प्लीज फाइल द मेमोरेंडम. Then the law also provide filing of the cross objection by the respondent against such part of the order which the respondent initially may not have chosen to file the appeal. It is provided that on receipt of the notice, appeal has been filed. The party against whom the appeal has been filed, that is respondent, may not have appealed against such order or any part thereof. Then he can file within 45 days a memorandum of the cross objection against any part of the order appealed against, and such memorandum shall be disposed of by the tribunal as if it is were the appeal presented within the time specified. Tribunal can condone the delay of up to 45 days beyond the specified time period of 45. मतलब memorandum of cross objection के लिए भी 45 plus 45. What is the fees for filing the appeal? The fees for filing the appeal would be 1,000 for every 1 lakh of tax or ITC, or the difference in the tax or ITC involved. However, the fee shall not exceed 25,000 and a minimum of 5,000. मतलब कम से कम 5,000 और मैक्सिमम 25,000. ये फीस हो गई उनकी. Fees for filing an appeal in respect of an order not involving any demand of tax, interest, penalty, fees shall be 5,000. There shall be no fees for application made before the appellate tribunal for rectification of error. Mandatory pre-deposit again we will discuss in the heading number 7. अब क्या डिपार्टमेंट अपील कर सकता है? आंसर इज यस. The commissioner may, on his own motion or upon request from the GST commissioner, examine the record of any order passed by AA or RA under the CGST, SGST, TGST for the purpose of satisfying himself as to the legality and propriety. The commissioner may
direct any officer subordinate to him to file the appeal to the tribunal within 6 months. यहां पर आप गौर करना, यहाँ पे 6 मंथ का टाइम तो है, बट कंडोनेशन का पॉइंट गवर्नमेंट को नहीं दिया गया। मतलब नॉर्मल अपील करने का टाइम लिमिट कितना था, फर्स्ट अपील करने का टाइम लिमिट कितना था बाय द टैक्स पेयर, इट वाज 3+1, करेक्ट। एंड देन डिपार्टमेंट के पास टाइम लिमिट कितना था, व्हाट वाज द टाइम, व्हाट वाज द टाइम फॉर द डिपार्टमेंट टू फाइल द अपील, फर्स्ट लेवल ऑफ अपील 6+1, ठीक है। अब आता हूं मैं सेकेंड अपील जो कि ट्रिब्यूनल है, उसमें क्या टाइम लिमिट था टैक्स पेयर के पास में, फाइल द अपील अगेंस्ट द मतलब अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर के अगेंस्ट में। सेकेंड लेवल ऑफ अपील में टाइम लिमिट क्या था, व्हाट वाज द टाइम टू फाइल द सेकेंड अपील, इट वाज 3+3, 3 months and 3 month continuation of delay. What is the time to file the appeal by the department? It is 6+0. +0 मतलब no condonation has been given in this case. ठीक है। Commissioner direct an officer subordinate to him to apply to the appellate tribunal within 6 months from the date on which the said order has been passed, as the may be notified on the recommendation of the council for the purpose of filing application before the AT for determining such point. ठीक है। The tribunal can permit the filing of the application within 3 months after the expiry of the specific time if it is satisfied. Now this is being newly added. What I like to highlight, earlier it was 6+0 and now they've given the condonation of 3 months. Are you getting my point? So department can file the appeal within 9 months. An application to the appellate tribunal shall be filed in APL 07 along with the relevant document electronically, and acknowledgement, provisional acknowledgement shall be issued immediately. Application can be filed manually in APL 7 along with the relevant document only if the registrar allow. और फर्स्ट लेवल ऑफ अपील में हम मैनुअली कब फाइल कर सकते थे, इट इज ए रिविजनरी क्वेश्चन, मैं सेम क्वेश्चन वापस पूछ रहा हूं, बट हम मैनुअली फाइल कर सकते थे फर्स्ट लेवल ऑफ अपील में अगर दो कारण थे। वी कैन फाइल द अपील मैनुअली फर्स्ट लेवल ऑफ अपील इफ समझे, अगर कमिश्नर नोटिफाई करता है बिल्कुल, या दूसरा व्हाट वाज द सेकंड रीजन वेयर इन वी कैन फाइल द अपील मैनुअली, yes, the order was not electronically available, but यहां पे यहां पर मुझे मैनुअली फाइल करने के लिए तभी मिलेगा जब रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रिब्यूनल विल अलाउ मी बाय द स्पेशल ऑर्डर या बाय द जनरल ऑर्डर। सच एप्लीकेशन शैल बी डेल्ट विद by the tribunal as if it were an appeal made against the order of AA or RA. Such application shall be dealt with the appellate tribunal as if it were an appeal made against the order of AA or RA. There is no requirement of making the pre-deposit by the department appeal that we call. Now, common provision in respect of appeal filed by the aggrieved person and the department. Memorandum of cross objection. Memorandum of the cross objection shall be filed electronically in APL 06. However, the memorandum may be filed manually only if registrar allowed. Okay. What is the date of the filing of appeal? अगर order uploaded है common portal पर, if the order against which we are making the appeal, ये order कौन सी authority का होगा, ये order कौन सी authority का होगा, adjudicating authority, अपीलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसका ऑर्डर होगा जिसके अगेंस्ट में हम अपील की बात करें टू द ट्रिब्यूनल, द ऑर्डर विल बी पास्ड either by the yes अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल, नो अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी। तो जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट में हम अपील फाइल करें, फर्दर अपील टू द सेकंड अपील, दैट इज ट्रिब्यूनल। फाइनल एक्नॉलेजमेंट
indicating the appeal number shall be issued in APL 02 on removal of the defects, if any, and the date of issue of the provisional acknowledgement shall be considered as date of the filing of appeal. If the order is not uploaded on the common portal, the appellant shall submit or upload a self-certified copy of the said order within 7 days. The appellant shall submit upload self-certified copy of the order within 7 days from the APL 5 or APL 7, and a final acknowledgement indicating the appeal shall be issued in APL 02 on removal of the defect. एक बार वापस रीड करते हैं. अगर आप ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में अपील कर रहे हैं वो अवेलेबल है कॉमन पोर्टल पर, तो क्या होगा? फाइनल एक्नॉलेजमेंट शैल बी इशूड एंड डेट ऑफ दिस और एक्नॉलेजमेंट विल बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील. अगर ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में कॉमन पोर्टल पर जो ऑर्डर अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिसीजन या ऑर्डर विद इन 7 डेज आपको देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द APL 5 या APL 7, एंड फाइनल एक्नॉलेजमेंट will be issued and the date of the this provisional acknowledgement shall be considered as date of filing of appeal. हाँ, अगर after the expiry of 7 days है तो क्या होगा? Final acknowledgement shall be issued in APL 2 on removal of the defect, if any, and the date of the submission of the self-certified copy shall be considered as date of filing. ये सेम चीज हमारे फर्स्ट लेवल ऑफ अपील में भी एग्जैक्टली सेम था. ऑर्डर ऑनलाइन अवेलेबल है तो क्या होगा? अगर ऑर्डर ऑफलाइन है एंड कॉपी 7 डेज में अगर सबमिट कर दी तो क्या होगा? एंड ऑर्डर अगर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है और सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी हमने 7 दिन के बाद में सबमिट की, तो जिस दिन हमने सबमिट की दैट विल बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील. ठीक है. The appeal shall be treated as filed only when the final acknowledgement indicating the appeal number is issued. The appeal and memorandum of the cross objection shall be signed in the prescribed manner. Registrar means registrar appointed by the government and shall include joint registrar, deputy registrar and assistant registrar. अब अपील ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की बात करते हैं. The tribunal, after hearing both the sides, may pass such order as it think fit, confirming, modifying, annulling the decision or order appealed against, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या? रेफर द केस back to the AA or RA or to the original adjudicating authority with such direction as it may think fit for a fresh adjudication or decision after taking additional evidence if necessary. This is important point. मतलब क्या हुआ कि वो एक नया ऑर्डर पास कर सकते हैं कंफर्म करते हुए, मॉडिफाई करते हुए या कैंसिल करते हुए, या वो चाहे तो इस मैटर को वापस रेफर कर सकते हैं. रेफर भी किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को या अपीलेट अथॉरिटी को, दोनों में से किसी को भी, या रिविजनल अथॉरिटी को. उनको ये भी कह सकते हैं कि आप फ्रेश वापस मैटर सुनो, या वो ये कह सकते हैं कि आप इसमें ये वाला पॉइंट, ये वाला एविडेंस आप कंसिडर करते हुए वापस इसको सुनो. इट मींस दे हैव द पावर टू डू एनीथिंग, मतलब टू गिव द डायरेक्शन. ट्रिब्यूनल may, if sufficient cause is shown, grant 3 adjournment of appeal to the either side for the reason to be recorded in writing. The law provides an advisory time limit of 1 year from the date of filing of the appeal for the tribunal to decide the appeal. The tribunal shall send a copy of its order to the appellate authority, revisional authority and original adjudicating authority. ये तो गवर्नमेंट के साइड से हो गया. Then appellate. ठीक है. थर्ड हो गया jurisdictional commissioner, SGST, CGST commissioner. Every order passed by the tribunal shall be final and binding on the parties unless the dispute is taken to the higher appellate forum. अच्छा एक चीज बताओ, order of the tribunal will be appealed to which forum? अगर मुझे ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करनी है तो कौन से फॉरम में होगी? इट विल बी द हाई कोर्ट. लेट्स, दो तरह की अपीलेट अथॉरिटी हमने पढ़ी थी ट्रिब्यूनल. व्हाट आर द टू कैटेगरी ऑफ द ट्रिब्यूनल?
हमने दो कैटेगरी के ट्रिब्यूनल को रीड किया था. लेट्स डू सम रिवीजन, सम स्लाइट रिवीजन, दैट्स इट. हमने दो कैटेगरी के ट्रिब्यूनल को रीड किया था. One is which is located in only in the Delhi and one which is located in every state. दो तरह के कॉन्सेप्ट हमने रीड किए थे. What are the two categories of the tribunal? एक था स्टेट बेंच और एक था, one is the state bench and another is the principal bench. Principal bench. एंड द प्रिंसिपल बेंच के अगेंस्ट, स्टेट बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर अपील फाइल करनी है, स्टेट बेंच ने टैक्स पेयर के अगेंस्ट में ऑर्डर दे दिया, नो प्रॉब्लम. अपील वुड राइज टू द अपीलेट टू द नेक्स्ट फॉरम इज हाई कोर्ट. नाउ सेकंड इज, अगर आपको अपील फाइल करनी है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल बेंच, देन इट विल गोज टू द प्रिंसिपल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करनी है, देन इट विल गोज डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट टू द हाई कोर्ट. ठीक है, सिर्फ इतना सा चेंज है. ठीक है. एंड एक पॉइंट और बताना मेरे को कि जो प्रिंसिपल बेंच है, द प्रिंसिपल बेंच वुड हियर द मैटर इफ, प्रिंसिपल बेंच कौन कौन से मैटर सुनेगी, द स्टेट बेंच एंड प्रिंसिपल बेंच, उनमें जो डिवीजन है, तो प्रिंसिपल बेंच को तीन कैटेगरी ऑफ द मैटर सुनने का पावर दिया गया है. वो कौन कौन सी कैटेगरीज है? इफ इट इज पर्टेन टू, फर्स्ट इफ इट इज पर्टेन टू, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, प्लेस ऑफ द सप्लाई रिलेटेड डिस्प्यूटेड, तो वो सिर्फ प्रिंसिपल बेंच सुनेगी, स्टेट बेंच नहीं सुनेगी. एंड सेकंड इज एंटी प्रॉफिटिंग 171, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो सेकंड हो गया एंटी प्रॉफिटिंग एंड थर्ड हो गया जो भी नोटिफाई करते हैं. इन तीन को कौन सुनेंगे? प्रिंसिपल बेंच सुनेंगे. एंड गवर्नमेंट कितने टाइम में फाइल अपील कर सकती है? गवर्नमेंट कैन फाइल दी अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 6 प्लस हाउ मच कंडोनेशन टाइम पीरियड, हाउ मच कंडोनेशन टाइम लिमिट, 3 मंथ. पहले कोई भी टाइम लिमिट नहीं था कंडोनेशन का, लेकिन अब ट्रिब्यूनल में कितना टाइम दे दिया? 3 मंथ का दे दिया. तो टोटल 6 + 3 9 मंथ हो गया. ठीक है. अब हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की. द ट्रिब्यूनल कैन करेक्ट इट्स ओन ऑर्डर फॉर एनी अपीरेंट मिस्टेक बट इट हैज नो पावर ऑफ रिव्यू. नो पावर ऑफ रिव्यू. रिव्यू का पावर हमारे डिपार्टमेंट, अपील डिपार्टमेंट में था, रिविजनल अथॉरिटी थी. लेकिन अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में कोई नॉर्मल रेक्टिफिकेशन है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, रेक्टिफिकेशन वर्सेस रिवीजन. रेक्टिफिकेशन वर्सेस रिवीजन, रिविजनल ऑर्डर, जो रिविजनल अथॉरिटी थी वो कहां पे थी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को सुनने के लिए देयर वाज ए रिविजनल अथॉरिटी जो 6 मंथ के बाद या 3 ईयर के पहले सुनेगी. करेक्ट. देन the same concept of revision is not available in the appellate tribunal. The tribunal can correct its own order for apparent mistake, but it cannot have the power. It does not have the power of review. Tribunal may amend any order passed by it so as to rectify any error apparent on the face of the record. ठीक है. If such error is noticed in the order by its own record on accord or it's brought to the notice by the commissioner or the SGST, UTGST commissioner or other party to the appeal within a period of 3 months from the date of the order. 3 महीने के अंदर अगर इंटीमेट कर दिया जाता है, then they can rectify. No amendment which has the effect of enhancing the assessment or reducing the refund or ITC or otherwise increasing the liability shall be made unless the party has been given an opportunity of the being heard. ठीक है. Withdrawal of appeal और एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल. अच्छा, हमने फर्स्ट अपील में हमने पढ़ा था कि वो विड्रॉल कर सकते हैं, बट व्हेन द विड्रॉल कैन नॉट बी डन, हमने कहा था ना, व्हेन द विड्रॉल कैन नॉट बी डन इट विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल. विड्रॉल कब नहीं किया जा सकता? एंड इट विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल.
when the withdrawal cannot be done and it will be subject to the approval of authority, अगर इसका फाइनल एक्नॉलेजमेंट इश्यू हो गया है तो देन यू कैनॉट विड्रॉन, इट विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल। और उनको कितना टाइम दिया गया? व्हाट इज द टाइम लिमिट विच दे हैव गिवन? उनको कितना टाइम दिया गया फॉर दिस टास्क कि उन्हें वो करना पड़ेगा विद इन ए पीरियड ऑफ दिस विड्रॉल अप्रूव करना पड़ेगा विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नाउ रिविजनल अथॉरिटी, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रिविजनल अथॉरिटी कौन से ऑर्डर का रिवीजन नहीं कर सकती? विच ऑर्डर दे कैन नॉट डू द रिवाइज? रिविजनल अथॉरिटी कौन से ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकती? ठीक है, एक तो हमने वो टाइम वाला डिस्कस किया था, और एक पॉइंट और डिस्कस किया था विच जिसके अगेंस्ट में अपील की गई है वो नहीं सुन सकती, या जिसके अगेंस्ट में उन्होंने कंक्लूड कर दिया वो नहीं सुन सकती। हाँ, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कंक्लूड कर दिया बट विच हैज नॉट बीन टेकन इन द अपील, अपीलेट अथॉरिटी में, विच हैज नॉट बीन हर्ड और डिसाइडेड, देन उस पॉइंट के अगेंस्ट में रिवीजन अथॉरिटी कैन पास द रिवीजन ऑर्डर। नॉर्मल व्हाट इज द टाइम लिमिट कि रिवीजन अथॉरिटी विल पास द ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ? हाँ, 1 ईयर। ये एक एडवाइजरी टाइम लिमिट है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए भी एक एडवाइजरी टाइम लिमिट है। एडवाइजरी का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली करेंगे, बट अगर इससे ज्यादा भी हो गया तो इट इज नॉट नॉट लाइक द ऑर्डर विल बी नल एंड वॉइड। So withdrawal of the appeal or application filed before the appellate tribunal, the appellant may at any time before the issuance of the order in respect of an appeal filed in APL 05 or application filed in APL 7 file an application for withdrawal, ठीक है, where the final acknowledgement has been issued, तो said appeal would be subject to the approval of tribunal। यहां पर 7 दिन की जगह कितना दिन का टाइम है? 15 दिन का टाइम है। वहां पे कितने दिन का टाइम था? 7 दिन का टाइम था। A fresh appeal, as the case may be, filed by the applicant pursuant to such withdrawal shall be filed within the time limit specified in ऊपर। जो हमने ऊपर वाले की टाइम की बात की थी ना, कौन सा टाइम था ऊपर? व्हाट वाज द टाइम लिमिट? 3+3+1 था कि 3+3 था? टाइम लिमिट टू फाइल द अपील बाय द अपीलेंट बाय द टैक्स पेयर, वो कितना टाइम था? 3+1 था कि 3+3 था? In the tribunal, I'm asking, correct? You are giving the answer for tribunal, right? You are giving the answer for tribunal. हाँ, ट्रिब्यूनल के लिए 3+3 था, एंड डिपार्टमेंट के लिए कितना था? 6+3 था। तो वो जो वापस अपील विड्रॉल के बाद फाइल करेंगे, दैट शुड ऑल्सो बी विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अब। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने विड्रॉल कर दी, ओरिजिनली विद इन द टाइम लिमिट था तो विड्रॉल भी विद इन द टाइम लिमिट, मतलब उतना टाइम का गैप मुझे मिलना चाहिए। आंसर इसमें
mandatory pre-deposit. See, now this line is very important. Appeal is statutory right. What is the meaning? See, there could be the fundamental right, there could be the statutory right. Fundamental right means which is secured by the Indian Constitution. Correct. But statutory right means it can be within the four corner of law. Appeal is not the fundamental right. Let's assume that suppose there is a one act which does not give the power to the file the appeal. Correct. Then it means you can't file the appeal because appeal is the not the fundamental right. So it will be with the limitation, whatever it has been given in the law. So like the limitation is being given in the law is 3+1. First appeal. Time period I'm talking about. It means you cannot file the appeal beyond the expiry of the 3+1. One such limitation is, allow me, one such limitation is that is generally applied this principle in tax statutes that appellant must be first pre-deposit the amount. Pre-deposit is where an appeal may succeed in his appeal and hence it would be unfair to settle this with the financial burden. To balance this factor, the tax law generally mandate the pre-deposit. What is the 107 subsection 6? The pre-deposit will be full amount of the tax, interest, penalty, fee. Demanded? No. Admitted by him. What does it mean? Suppose there is a demand against Mr. A. 10 crore. Now Mr. A says that 1 crore is actually I am liable to pay, but somehow it is missed. But 9 crore, I will file the appeal against this because I'm not admitting. So what is admitting? He is admitting 1 crore. So this 1 crore will be deposited in full and 9 crore ka 10%. 10% of the remaining amount of the tax. Point to be noted, it is tax. Here interest, fine, fee, penalty, all is being clubbed for full amount. तो 9 करोड़ में भी क्या है, मान लो आपका 7 करोड़ टैक्स है और 2 करोड़ आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी है, तो 10% वुड बी ऑफ 7 करोड़, नॉट एंटायर 9 करोड़. सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ, कितना मैक्सिमम होगा, 20 करोड़ मैक्सिमम होगा. It cannot be more than that 20 crore. This 10% will not be more than 20 crore. CGST 20 crore is GST. However, no appeal shall be filed unless 25% of the penalty has been paid by the appellant. ये किसकी बात कर रहा है? 129 subsection 3 की बात कर रहा है. What is that? E-way bill का penalty. E-way bill से related. तो ई-वे बिल की फाइल अपील तभी होगी जब मिनिमम एटलीस्ट 25% ऑफ द पेनल्टी हैज बीन पेड. जैसे ही हम प्री डिपॉजिट करेंगे, तो डिमांड स्टे हो जाएगी. नहीं तो कितना टाइम, सी डिमांड स्टे हो जाएगी. अदरवाइज व्हाट इज द टाइम जिसमें वो रिकवरी स्टार्ट हो जाती है. अगर कोई डिमांड है, लेट्स से इफ आई हैव नॉट पेड एंड आई हैव नॉट फाइल्ड, देन कितने टाइम के बाद में रिकवरी स्टार्ट हो जाती है? हाउ मच टाइम द रिकवरी वुड बी स्टार्टेड? द रिकवरी वुड बी स्टार्टेड विद इन 3 month. ठीक है, एक एग्जांपल रीड कर लेते हैं. एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रिसीव द सपोज नोटिस डिमांडिंग द आईजीएसटी ऑफ 600 crore, पेनल्टी ऑफ रुपीज 100 crore एंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10 crore. Adjudicating authority passed the order confirming the entire demand, while ABC admit the tax liability, penalty and interest of rupees 10 crore, 50 crore, 50 crore, 10 crore and 1 crore respectively. Now, एक बार संजय, कैन यू प्लीज टेल मी कि इस केस में
अगर इतना डिमांड है और अगर ये 61 करोड़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको हम डबल कर लेते हैं, 50 की जगह 60 है, 10 की जगह 20 है और 1 की जगह 2 है, देन यू कैलकुलेट एंड टेल मी कितना प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। 60, 20 एंड 2 है, आर यू देयर? 60, 20 एंड 2 है, एंड एज्यूम दैट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी 61 करोड़ की वो एक्सेप्ट कर रहा है। सॉरी, नोटिस, एक सेकेंड, ठीक है ना, इसमें एक और वापस रिपीट कर लेते हैं। तो मतलब 50 प्लस 10 60 प्लस 61, ये इतनी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द प्री डिपॉजिट? तो 61 एक्सेप्ट करे, 61 डिपॉजिट कर दिया, टोटल डिमांड कितनी थी? 600 करोड़ की। 600 करोड़ में से 50 करोड़ एक्सेप्ट कर लिया एंड यस पेड, व्हाट वाज द रिमेनिंग? 550 करोड़। 550 करोड़ का 10% डिपॉजिट करना है, विच विल बी 55 करोड़, बट अपर कैप कितनी है? व्हाट इज द अपर कैप? व्हाट इज द अपर कैप? 20 प्लस 20, मैक्सिमम इट विल बी 40 करोड़। तो कितना प्री डिपॉजिट होगा? 40 करोड़ तो वो, और 61 ये 61 ये, टोटल 101 करोड़ का प्री डिपॉजिट होगा। नाउ अगर मैं सेकंड लेवल ऑफ अपील की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट सेकंड लेवल ऑफ अपील, इफ आई विल टॉक अबाउट सेकंड लेवल ऑफ अपील, दैट इज ट्रिब्यूनल, तो आपको जितना एडमिट किया इतना फुल, और रिमेनिंग का 10 मोर परसेंट। ये ध्यान रखना, पहले था 20%, ये पहले था 20%, मतलब आपने फर्स्ट 10 जमा करवाया एंड देन एडिशनल यू रिक्वायर टू, बट अब उन्होंने कितना कर दिया? 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट। ये 10% इन एडिशन टू है, ऑब्वियसली ना। जो 10% आप डिपॉजिट करवा चुके हो, लाइक इन माई लास्ट एग्जाम्पल 40 करोड़, तो ये ओवर एंड अबव है, ठीक है। Where the appellant has made the pre-deposit, the recovery proceeding for the balance amount shall be deemed to be stayed till the disposal of the appeal. एक बार रीड कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन था। इट इज इंपॉर्टेंट that if any person file the appeal in accordance with the requirement of section 112 subsection 8, that is on pre-deposit, the recovery proceeding will be deemed to be stay. However, the taxpayer is not able to file the appeal to the appellate tribunal, ट्रिब्यूनल तो बना नहीं है। तो डाउट ये था, जैसे फर्स्ट अपील था, कमिश्नर अपील ने ऑर्डर पास किया लेट से 2022 में, अब इसकी 3 महीने के बाद तो रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, द रिकवरी वुड बी स्टार्टेड, जो हमने सेक्शन 79 में या सेक्शन 83 में रीड किया था। 3 मंथ बाद रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अपील तो फाइल नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी तक उस टाइम तक ट्रिब्यूनल था नहीं। देन व्हाट वुड बी द केस? तो ये डिमांड कैसे स्टे होगी? देन दे आर सेइंग not able to make the pre-deposit. For this purpose, it has been clarified in the circular that taxpayer can make the payment equal to the pre-deposit by navigating services, leisure, and payment toward demands. From his dashboard, the said amount deposited by the taxpayer will be adjusted against the amount of the pre-deposit required to be deposited at the time of filing of appeal. As a result, the recovery of the remaining amount as per the order will stay. The taxpayer also need to file an undertaking declaration with the jurisdiction proper officer that he will file appeal against the said order of the authority before the appellate tribunal, as and when it come into operation within prescribed time limits, on providing the said undertaking and on payment of an amount equal to the amount of the pre-deposit, the recovery of confirmed demand will stay. If any taxpayer has already paid the full amount that was intended to have been paid toward the demand through the prescribed form, in such case, the said person can file a application electronically to adjust the payment made toward the said demand. So, ये एक मतलब मैकेनिज्म है जो कि पोर्टल पर अवेलेबल है, बाय विच यू कैन एडजस्ट till the time functionality is made available. The concerned taxpayer may intimate the officer about the same. That officer may not insist on recovery. तो जब तक ये फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं, अब तो अवेलेबल है, बट जब ये अवेलेबल नहीं थी, then in that case they can just simply intimate.
ये प्री डिपॉजिट का चार्ट है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Appellate authority admitted liability in full and then 10% subject to the maximum of 20 crore. Then admitted liability in full 10% subject to the maximum 40 crore क्योंकि IGST में डबल हो जाएगा. Appellate tribunal 10% of the CGST in dispute in addition to the amount deposited before appellate authority subject to the maximum of 20 crore and 10% of the IGST and subject to the maximum of 40 crore. तो अब दोनों में सेम है. पहले अपर कैप भी अलग अलग थी. So equivalent amount of SGST is also required to be deposited. Therefore, whether appeal involves CGST and SGST or IGST, in both the cases, the aggregate amount of the tax deposited remains same. That is 20 plus 20, 40 crore. C और S है तो और IGST तो भी 40 crore. एक बार skip करते हैं वाले एग्जांपल को. Interest on refund of pre-deposit. If the pre-deposit made by the appellate before the appellate authority or the tribunal is required to be refunded consequent to the order of appellate authority or tribunal as the case may be. Interest as provided in section 56 shall be payable from the date of payment of amount till the date of the refund of such amount. Do you remember we have discussed this point in refund chapter? This rate of interest we have discussed in the refund chapter. Do you remember? कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था? ये तो लाइबिलिटी का हो गया. रिफंड का मतलब मुझे जो लाइबिलिटी पे करनी वो 18% है. रिफंड में एक जगह 6 था, एक जगह 9 था. जस्ट ट्राई टू रीड द प्रोविजन ऑफ द रिफंड एंड देन टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास. सेक्शन 54, सेक्शन 56. ठीक है. तो प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस बिफोर द अथॉरिटी और द अपीलेट ट्रिब्यूनल. ठीक है. Rule 112 of the CGST rules lays down the appellant shall not be allowed to produce before appellate authority or tribunal any evidence, whether oral or documentary, other than the evidence produced by him during the course of the proceeding before adjudicating authority or appellate authority. But there is some exception. What is the exception? However, rules provide the exception. The production of additional evidence before appellate authority or tribunal could be allowed where the adjudicating authority or as the case may be appellate authority has refused to admit evidence which ought to have been admitted. मतलब वो ट्राइब्यूनल को कह सकते हैं कि ये मुझे प्रोड्यूस करना था बट उन्होंने लिया ही नहीं. They have not accepted the same. Where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the additional evidence which he was called upon to produce by the adjudicating authority or as the case में by appellate authority. मतलब प्रोड्यूस करने के लिए कहा था but he was not able to produce because he was prevented by sufficient cause. कुछ भी कारण हो. Let's say there was a natural calamity. He was in state X from where he liked to bring the document, but there was a natural calamity by which he cannot produce. Where the appellant was prevented by sufficient cause, any before the adjudicating authority or as the case may be appellate authority, any evidence which is relevant to the ground of the appeal. ठीक है. Where the adjudicating authority or as the case may be appellate authority made the order appealed against without giving sufficient opportunity to the appellant to adduce evidence relating to the ground of the appeal. मतलब sufficient cause to prevent था या उन्हें सबमिट करने नहीं दिया या देयर वाज नॉट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी. मतलब सपोज कर उन्होंने आज कहा कि यू विल सबमिट बाय टुनाइट या बाय टुमारो, विच वाज नॉट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी. तो कई अगर ऐसे कारण हैं तो ट्रिब्यूनल या अपीलेट अथॉरिटी विल एक्सेप्ट द एडिशनल डॉक्यूमेंट.
No additional evidence shall be admitted unless the appellate authority or appellate tribunal records in writing the reason for admission. Reason तो लिखना पड़ेगा, right? The appellate authority or tribunal shall not take any additional evidence unless the said authority has been allowed a reasonable opportunity to examine the evidence or document or the cross-examining any witness produced by the appellant, or to produce any evidence or any witness of the additional evidence produced by the appellant. The provision of this rule shall not affect the power of the appellate authority or the tribunal to direct the production of document or the examination of witness to enable this to disposal of the appeal. So, अब representative, authorized representative. The question comes, can the chartered accountant be the authorized representative in the tribunal? Correct. Any person who is entitled or required to appear before the GST officer or the appellate authority or the tribunal in connection with any proceeding may appear through authorized representative. मतलब ट्रिब्यूनल में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपियर हो सकते हैं, एक्सेप्ट व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू अपियर पर्सनली और फॉर एग्जामिनेशन ऑन ओथ और अफर्मेशन. मतलब कई बार क्या होता है, समन इशू करके उसको पर्सनली बुलाया जाता है बिकॉज उसका ओथ का एग्जामिनेशन और समथिंग लाइक दैट कुछ करना है. इन दैट केस ही नीड टू अटेंड पर्सनली, अदरवाइज इट कैन बी थ्रू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. The next question, who can be the authorized representative? Broadly, it can be relative, employee, advocate, and even chartered accountant or cost accountant, company secretary, or the GST practitioner. All can be authorized representative even in the GST tribunal. It is also provided that a specified indirect tax gazetted officer who has served at least 2 years can appear as a representative after 1 year from the date of their retirement or resignations. Disqualification. The GST law also provides some disqualification for an authorized representative who has been dismissed or removed from the government service, who is convicted on offense connected with any proceeding under the GST or under the earlier law or under any of the act passed by the state legislature dealing with the imposition of the tax on sale of the goods or supply of the goods or services. ठीक है. Who is found to be the guilty of the misconduct by the prescribed authority. Okay. Who has been adjudged as an insolvent shall be qualified to represent any person for all time. ठीक है. जो ए टू बी, ए बी एंड सी में लिखा वो ऑल टाइम के लिए रहेंगे, और डी वाले जो केस है फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द इंसॉल्वेंसी कंटिन्यू इन केस ऑफ द पर्सन रेफर्ड. जब तक ये इंसॉल्वेंसी फाइनल नहीं हो जाती, कंटिन्यू हो जाती है, तब तक वो प्रेजेंट नहीं करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कर पाएंगे. Any person who has been qualified under the, who has been disqualified under the provision of the SGST, UTGST shall be deemed to be disqualified under the CGST also. Same बात है. Financial and administrative power of the president. The president shall exercise the financial and administrative power of tribunal. ठीक है. Has been given in the section 114. अब बात करते हैं अपील टू द हाई कोर्ट. कौन सी अपील डायरेक्टली हाई कोर्ट को होगी? नहीं सॉरी, कौन सी अपील हाई कोर्ट की जगह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को होगी? Which appeal will be directly goes to the Supreme Court instead of the High Court? If it is principal bench. Law provides that any person aggrieved by the order of the state bench or the tribunal may file the appeal to the High Court. High Court may admit the appeal if it is satisfied that case involves substantial question of law. ये important point है. हमने बात की थी 2 member bench, 1 member bench. यहां पर ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है ना, ये पॉइंट भी यहां पे डिस्कस किया था. कैन यू रिकॉल एंड टेल मी व्हेन द ट्रिब्यूनल कैन, व्हेन द सिंगल मेंबर कैन हर्ट द डिसीजन
कैन हर्ट द मतलब कि अपील अगेंस्ट एनी डिसीजन और ऑर्डर। अगर उसमें दो इंपॉर्टेंट बात थी, एक सिंगल मेंबर सुन सकता है बेंच को, सिंगल मेंबर ऑफ बेंच कैन बी हियर द केस विच डज नॉट इन्वॉल्व द टैक्स, जितना अमाउंट ऑफ जो डिफॉल्ट था वो कितना हो, लेस देन 50 लाख हो, एंड इट विल बी द क्वेश्चन ऑफ लॉ और डज नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब वहां पर क्या रीड किया था हमने, सिंगल मेंबर सुन सकती है अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर हो, या अदर देन क्वेश्चन ऑफ लॉ, डज नॉट इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ लॉ। करेक्ट, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। मतलब फैक्ट बेस्ड 50 लाख तक क्या मैटर को सिंगल मेंबर का पावर है, मतलब सिंगल मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल हैज द पावर। Substantial question of law is very, very important for High Court, because High Court will never hear the case which is based on the fact. तो एक बात ध्यान रखना, ट्रिब्यूनल इज द लास्ट अपीलेट मैकेनिज्म फॉर फैक्ट फाइंडिंग। जो फैक्ट बेस्ड केस है ना, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल तक ही सुने जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट विल नेवर एंटरटेन द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। हाई कोर्ट में मैटर तभी सुना जाएगा जब वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन जनरली मींस क्वेश्चन दैट मस्ट बी आंसर्ड बाय अप्लाइंग द रिलेवेंट लीगल प्रिंसिपल ऑफ relevant legal principle to interpret the law. This is distinct from the question of fact that must be answered by evaluating the relevant fact. जैसे होता ना कि वो ट्रांजेक्शन आपके 2A में आ रहा था, 2B में नहीं आ रहा था, वट एवर, ठीक है, you have taken the exercises, you have not reported this particular in the GSTR9. These are the question based. So there is no proper documentation, there is no proper invoice. It can be fact, but whether this rule is applicable or not applicable, whether this rule is ultra virus, say import of the goods. Normally, we know the import of the goods will never come in the GSTR1, but let's say officer has raised the demand in the GSTR2B, but the officer has raised the demand that you are not entitled to take ITC because import of the goods are not appearing in your GSTR2B. Now the question comes whether rules 36(4), 16(2) AA would be applicable or not. It can be also an interpretational issue, so which can be heard by the High Court. ठीक है, unlike answer to the question of fact which are dependent on the particular circumstances or fact-based situation, answer to the question of law being based on the legal principle can be applied to the many situations. Recently, Supreme Court in the matter of Nazir Mohammed versus J. Kamla on August 20 pronounced that to be substantial, a question of law may be debatable, not previously settled by the law of the land or any binding precedent, and must have the material bearing on the decision of the case if answered either way. For instance, if the question is regard applicability of an examination notification of a to a taxpayer due to the two possible interpretation of the notification could be the question of law. मतलब क्या हुआ, a question regarding applicability of exemption notification to a taxpayer due to the two possible interpretation of a notification could be question of law. Conversely, determination of the quantum of the exemption available to the taxpayer to be question of fact. Time limit 180 days. What is the time limit to file? The time limit is 180 days from the date on which the order against is received by the aggrieved decision. However, High Court has the power to condone the delay on satisfied on sufficient cause being shown. यहाँ पे कितना नंबर ऑफ डेज है, ये हाई कोर्ट के पावर को डिसाइड नहीं किया जा सकता इन द जीएसटी लॉ. हाई कोर्ट कैन कंडोन द डिले. फॉर्म ऑफ अपील APL 08, decision of the High Court. On being satisfied that a substantial question of law is involved, the High Court shall formulate that question, and the appeal shall be heard only on the question so formulated. However, the High Court has the power to hear the appeal or any other substantial question of law if it is satisfied that the case involved such question. High Court shall decide the question of law so formulate and deliver such judgment thereon containing the ground on which such decision is founded and may award such cost as it deem fit.
High Court may determine any issue which has not been determined by the tribunal or has been wrongly determined. The Code of the Civil Procedures relating to appeal to the High Court shall apply to the appeal before the High Court under this section also. Okay. Appeal shall be heard by the bench not less than 2 judges, and the point on which they differ, if any, then be heard upon that point only by one or more judges of the High Court. The final judgment on the point shall be decided by the majority, including those who first heard. Deposit of all tax due is required to be made, otherwise the inherent power of the High Court have to be invoked for obtaining the stay pending disposal of appeal. Appeal to the Supreme Court. The law provides for appeal to the Supreme Court from any judgment or order or decree of the High Court, plus the order passed by the principal bench of the tribunal. Correct? In any case which on its own motion or an application made by an officer of the party aggrieved, immediately after passing the judgment, High Court certified to fit one for appeal to the Supreme Court. The provision of the Code of Civil Procedure will apply here. The Supreme Court can vary, confirm, or reverse the judgment of High Court or the tribunal as the case may be, and may award cost. It can also remand matter for fresh considerations. Some due to be paid notwithstanding appeal, etc. Some due to the governments as a result of an order passed by the principal bench or state bench of the tribunal or High Court, notwithstanding that an appeal has been preferred to the High Court or Supreme Court, shall be payable in accordance with the order so passed. Appeal not to be filed in certain cases. हमने क्या पढ़ा था? Section 120 and 121. Same PV. Okay. So in tax dispute, the tax department is always an opposite party from a practical standpoint of view. Many appeals at the tribunal, High Court or Supreme Court are instituted by the tax department. The section contains provision that aims at limiting the filing of appeal by the department in complex matter or the matter involving small tax amount, non-complex matter, while providing for non-filing of appeal by the office in certain cases. Sorry. Also provide that such step should not stop the tax department to file the appeal. हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस केस में डिपार्टमेंट फाइल ही नहीं कर सकता. The board, on the recommendation of the GST Council, issue the order or the instruction or the direction fixing the monetary limit for regulating the filing of appeal or application by the CGST officer. Then non-filing of appeal or application by the officer on account of the such monetary limit fixed by the board shall not preclude such officer from filing the appeal involving the same or similar issue or question of law. मान लो अमाउंट आपकी 20 लाख फिक्स की है, एज्यूम करता हूं. देन अगर उससे कम अमाउंट है बट दैट मैटर इज क्वेश्चन ऑफ लॉ और इन एनी अदर केस इन्वॉल्विंग द सेम अमाउंट, ठीक है, और सिमिलर इश्यू, तो जस्ट बिकॉज की एक मैटर, सी पॉइंट टू बी नोटेड, लेट्स से कि कोई डिमांड है, ठीक है, वो डिमांड अपील नहीं कर सका डिपार्टमेंट बिकॉज बोर्ड डज नॉट गिव द पावर. मान लो वो था आईटीसी मिसमैच का और 10 लाख रुपए की वैल्यू थी. नाउ सेकंड इश्यू विच आल्सो हैव द सिमिलर अमाउंट बट आईटीसी मिसमैच का नहीं है, कोई और मैटर है, ठीक है, या 20 लाख से ज्यादा है अमाउंट बट आईटीसी मिसमैच का है. जस्ट बिकॉज कि वो 10 लाख से नीचे वाला मैटर आईटीसी मिसमैच का था, उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट ने अपील नहीं की, तो ये जो अमाउंट है वो 20 लाख या 25 लाख जो भी लिमिट है उसके बियॉन्ड, और बट मैटर सेम है, दे कैन नॉट फाइल द अपील. ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट.
It says that non-filing of the appeal, जो पहला मैटर था नॉन फाइलिंग ऑफ द अपील, दैट वाज बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी लिमिट, इट वाज बिलो 20 lakhs, एग्जांपल के रूप में बोल रहा हूं। एग्जैक्ट लिमिट क्या है वो दैट वी विल डिस्कस। पर अगर अपील फाइल नहीं कर पाया तो सेकंड मैटर जिसमें सेम इश्यू है, ठीक है, सेम इश्यू है बट अमाउंट ज्यादा है, दे कैन फाइल द अपील। इट कैन नॉट बी द ग्राउंड कि सर आपने 10 लाख में फाइल नहीं किया तो यू फॉर आईटीसी मिसमैच यू कैन नॉट फाइल in this case because matter is same. No, no person who is party in application or appeal can contend that as acquisite in the decision or the disputed issue by not filing of appeal. Okay, same point. The appellate tribunal or the court hearing such appeal shall have regard to the circumstances on account of the monetary limit fixed by the court. अब clarification regarding the monetary limit. क्या clarification था? Clarification regarding the monetary limit for filing appeals, application or SLP by the department before the GST 80, High Court या Supreme Court. कितना अमाउंट है? GST 80 में मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर दी 20 लाख। मतलब अगर मैटर 20 लाख से नीचे है तो देन इन दैट केस दे विल नॉट फाइल द अपील टू द GST 80। हाई कोर्ट है तो 1 करोड़ की लिमिट है और सुप्रीम कोर्ट है तो 2 करोड़ की लिमिट है। Amount to be considered for applying the monetary limit for filing the appeal has been explained in the below table in relation to the category of the disputes. अब कैटेगरी ऑफ द डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। दे माइट आस्क द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस टेबल। तो एक बार इस टेबल को अंडरस्टैंड करना अच्छे से। डिस्प्यूट पर्टेनिंग टू द डिमांड ऑफ टैक्स विद और विदाउट पेनल्टी। टैक्स की डिमांड है विद या विदाउट पेनल्टी है या विद और विदाउट इंटरेस्ट है। देन अमाउंट टू बी कंसिडर्ड फॉर अप्लाइंग द मॉनेटरी लिमिट, कौन सा अमाउंट? 20 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़। एग्रीगेट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट, जितना टैक्स का डिस्प्यूट है ना वो 50 लाख, वो जो 20 लाख ऊपर था ना उससे अगर कम है तो फाइल नहीं कर सकते, अगर उससे ज्यादा है तो फाइल कर सकते हैं। अगर डिस्प्यूट मान लो सिर्फ इंटरेस्ट का है, dispute is only interest, then amount of the interest should be more than 20 lakh. If it is only penalty, then amount of the penalty. If it is only late fees, then amount of the late fees. If it is interest, penalty, and or late fees without tax, then aggregate of the interest, penalty, and late fees. तो जितने डिमांड हो सबको टोटल कर दो, ठीक है। Erroneous refund, amount of refund in dispute, CGST, SGST, UTGST। erroneous refund अगर है तो CGST, SGST जितना भी रिफंड है उस सबको टोटल कर लो। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात है अगर टैक्स है और टैक्स के साथ में भली पेनल्टी है या भली इंटरेस्ट है, इट विल ignore and only amount of the tax, aggregate of the amount of the tax in dispute would be considered for calculating the above limit. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई कैन से monetary limit shall be applied on the disputed amount of the tax, interest, penalty as the case may be, in respect of which appeal or application is contemplated to be filed in a case. हाँ, will be ignored, right. In a monetary limit shall be applied on the disputed amount of the tax, interest, penalty, late fees as the case may be, in respect of which appeal is contemplated to be filed in a case. In a composite order which disposed more than one appeal or demand notice, the monetary limit shall be applicable on the total and not on the amount involved in individual's appeal या individual demand notice exclusive. Monetary limit shall not be applicable where the decision to file the appeal shall be taken on merit irrespective of such monetary limit, where any provision of the GST law is held to be ultra virus to the Constitution of India, where any rules regulation has been held to the ultra virus. तो क्या है ये monetary limit जो हम ऊपर बात कर रहे हैं shall not be applicable
अगर पूरा लॉ ही मतलब लॉ का कोई रेस्पेक्टिव प्रोविजन या रूल्स कोई है वो अल्ट्रा वायरस हो गया। वेयर एन ऑर्डर or notification, instruction, or circular issued by the government or the board has been held to be ultra virus to meet their under. हम क्या बात कर रहे हैं? Let's read again main heading which we are talking about. Monetary limit specified above shall not be applicable in the following circumstances where decision to file the appeal shall be taken on merit irrespective of the said monetary limit. तो जहां पे पर्टिकुलर लॉ के वो हम आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं। लेट मी हाईलाइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो। क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेस में अगर है तो वो नहीं होगा। वी हैव रेड ओनली वी हैव रेड दिस पॉइंट कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड द मॉनेटरी लिमिट, राइट। ठीक है, एक बार आगे आगे बढ़ते हैं। तो वेयर एनी प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ हैज बीन हेल्ड टू बी द अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ वेयर द रूल्स हैज बीन हेल्ड टू द अल्ट्रा वायरस वेयर एन ऑर्डर और नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन और सर्कुलर इशूड बाय द गवर्नमेंट or the board has been held to be the ultra virus where the matter is related to the valuation, classification, refund, place of the supply। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैटर वैल्यूएशन से रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, रिफंड से रिलेटेड है, पीओएस से रिलेटेड है, एनी अदर इश्यू which is recurring in the nature and involve the interpretation or provision of the act, rules, notification, circular, etc., then it does not have the barring on the amount. Where the structure adverse comment has been passed, cost has been imposed against the government or department of their officer. Any other cases or class of the cases where it is necessary to contest in the interest of justice. Non-filing of appeal based on the above monetary limit, ये बात हम पढ़ चुके हैं, shall not preclude the tax officer from filing the appeal in any other case। कोई दूसरा मैटर है जिसमें सेम या सिमिलर इश्यू है तो वो प्रीक्लूड नहीं होगा, मतलब वो फाइल कर सकता है, कैन फाइल द अपील इवन इफ अर्लियर केस जिसमें वो मॉनेटरी लिमिट के कारण अपील फाइल नहीं कर सका। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आईटीसी मिसमैच का इश्यू था, 20 लाख से नीचे का था, फॉर दैट देयर ही कैन नॉट फाइल द अपील। नाउ अनदर केस है जिसमें आईटीसी मिसमैच का इश्यू है बट उसमें डिमांड है 50 लाख की, कैन ही फाइल द अपील? आंसर इज यस। यू कैन नॉट से कि दैट बिकॉज आईटीसी मिसमैच के इश्यू में पहली फर्स्ट टाइम अपील फाइल नहीं की, ही कैन नॉट फाइल द अपील सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम not filed, it is not because of the interpretation, it is not because of the same, it is not because of the ITC mismatch issue, it is because of the monetary limit। तो monetary limit के कारण अगर वो अपील फाइल नहीं कर पाया, he can file the appeal अगर अमाउंट बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है। ठीक है, we have discussed this। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि है ना मतलब वो कुछ कैलकुलेशन दे सकते हैं एंड दे कैन आस्क द अमाउंट, देन यू नीड टू चेक क्या मॉनेटरी लिमिट एप्लीकेबल होगी, कितना मॉनेटरी लिमिट एप्लीकेबल होगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग, इस लिमिट में आएगा नहीं आएगा, एंड देन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जहां पे वो अपील कर सकता है, जहां पे वो फाइल कर सकता है इवन विदाउट कंसिडरिंग, इग्नोरिंग द लिमिट विच इज बीइंग गिवन इन द लॉ। सेक्शन 121 नॉन अपीलेबल डिसीजन या ऑर्डर है। ठीक है, 121 lays down that no appeal can be filed against the following order। पहला, an order of the commissioner or authority empowered to direct the transfer of the proceeding from one officer to another officer, an order pertaining to the seizure or retention, register and other document, or order sanctioning the prosecution under the act, or order passed under section 80 that is payment of tax in installment। मतलब फाइल ट्रांसफर हो गई, सीजर या रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर सैंक्शनिंग द प्रोसिक्यूशन और सेक्शन 80 का ऑर्डर है। इन दीज केसेस अपील कैन नॉट बी फाइल अगेंस्ट दीज ऑर्डर।
So I think this is over. Our chapter is over. And last 10 minutes we'll do the quick revision. ठीक है, हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं. बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट अपील किसके, मतलब द फर्स्ट अपील वुड बी विद द फर्स्ट अपील वुड बी विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. पहली अपील किसके पास फाइल होगी? पहली अपील, फर्स्ट अपील वुड बी फाइल विद द अपीलेट अथॉरिटी. एंड रिवीजन अथॉरिटी में अपील, रिवीजन अथॉरिटी के लिए टैक्स पेयर कैन रिक्वेस्ट फॉर द रिवीजन ऑफ एनी ऑर्डर. कैन द टैक्स पेयर request for revision of any order? No, it cannot. It can either by the revisional authority himself or any request from the other state commissioner. ठीक है. What is the time limit to file the first appeal? What is the time limit to file the first appeal? 3+1. And what is the time limit to file the first appeal by the department? What is the time limit to file the appeal by the department? 6+1. Correct. What is the time limit of revisional authority to pick the case? Revisional authority जो पिक करेंगे केस, उनके लिए टाइम लिमिट क्या है? मतलब नॉट नॉट नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं. मैं वापस क्वेश्चन फ्रेम करता हूं. रिविजनल अथॉरिटी कोई ऑर्डर पिक करेंगे, ठीक है, जिसको रिवीजन करना चाहते हैं. ठीक है, वो मिनिमम कब स्टार्ट कर सकते हैं? इमीडिएटली आफ्टर द ऑर्डर, या 3 मंथ बाद में, या आफ्टर सम टाइम लिमिट. दे कैन do the revision only after the expiry of the 6 month. Absolutely correct. And what is the maximum time limit for revision? What is the maximum time limit for revision? That is 3 years. What is the maximum time limit? That is the 3 years. अच्छा, मुझे बताना, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में एक तो कमिश्नर है, या एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द ज्वाइंट कमिश्नर है. तो ये किस बात पर डिपेंड करता है कि मैटर वुड बी लाइज विद द कमिश्नर और मैटर वुड लाइज विद द ज्वाइंट कमिश्नर? अगर ये किस बात पर डिपेंड करता है कि मेरी जो अपील फाइल होगी वो कमिश्नर के पास होगी या ज्वाइंट कमिश्नर के पास होगी? इट इज बेस्ड ऑन विच क्राइटेरिया? कुछ तो क्राइटेरिया होगा, राइट? यस, देयर विल बी द क्राइटेरिया कि जिस डिसीजन या ऑर्डर की हम बात करें, जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल करें, passed by which authority? Now you tell me, if it is passed by which authority, then the order, then the appellate authority, first appeal would lies with the commissioner. ये ऑर्डर जो पास किया है वो कौन से ऑफिसर की रैंक ने पास किया, तो मैं कमिश्नर के पास में जाऊंगा फॉर फर्स्ट अपील. If the decision or order against which the appeal is to be filed is passed by which rank, by additional commissioner or joint commissioner, then your appeal would lies with the commissioner. Correct. And how much pre-deposit is required if department is filing the appeal? No pre-deposit. Who cannot see whether appellate authority remand back the matter to the adjudicating authority or not? No. Order of revisional authority. If I am not satisfied, can I request for the revision again? The order for which revisional authority has revised the order and passed the revision order, and I'm not satisfying the order, can that order be again requested for revision? Answer is no. क्योंकि एक रिविजनल अथॉरिटी जो रिवीजन ऑर्डर पास कर चुकी है, इट कैन नॉट बी अगेन रिवाइज.
It can only be appealed. So appeal against the revisional authority would be with the appellate authority or will be directly to the tribunal. Decision या order passed by the revision authority against which the appeal would be with the appellate authority या appellate tribunal. Appellate authority या appellate tribunal? The answer is appellate tribunal. Correct. Appellate tribunal. Absolutely. So क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी दोनों एटलीस्ट दोनों एट पार है, मतलब दोनों सेम है, तो इसका मतलब रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर मुझे अप्लाई करना है, अपील फाइल करनी है, देन आई विल फाइल द अपील विद द ट्रिब्यूनल. एंड अगर मैं जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करूं, इट इज बीइंग डिवाइडेड बेसिकली इन टू टाइप ऑफ द बेंचेस. वन इज टू टाइप ऑफ द बेंचेस. वन इज अपीलेट ट्रिब्यूनल. नहीं, अपीलेट ट्रिब्यूनल दो बेंच है, एक जो दिल्ली में है और एक जो हर एक स्टेट में है. दो बेंचेस हैं, दो कैटेगरी ऑफ बेंच है. करेक्ट. वन इज प्रिंसिपल बेंच एंड वन इज another is state bench. Correct. Single member bench appeal can be here by the single member bench अगर total amount of the interest penalty fees जितना भी है does not exceed कितना, how much, then it can be heard by the single member bench. If the amount of tax or ITC, fine, fee, penalty does not exceed rupees 50 lakhs, 50 lakhs, not 50,000. You are correct in 50,000, but 50,000 का केस कौन सा अलग है, that we will discuss. तो 50 लाख से exceed नहीं करा, plus matter does not involve the question of law or does not involve the question of fact. सिंगल मेंबर कब सुन सकती है? अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं है. क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है. एब्सोल्युटली करेक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है. एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड. तो इस केस में सिंगल मेंबर भी सुन सकती है. ठीक है. That is okay. Okay. Which order are not appealable? Any two example? Which order are not appealable? कौन से ऑर्डर की हम अपील नहीं कर सकते? कौन से ऑर्डर की हम अपील नहीं कर सकते? कौन से ऑर्डर की हम अपील नहीं कर सकते? एनी वन और टू? एक सेक्शन 80 इंस्टॉलमेंट का कोई ऑर्डर है, उसकी अपील नहीं कर सकते. एनी वन मोर एग्जांपल? एनी वन मोर एग्जांपल? फाइल ट्रांसफर की है, दैट कैन नॉट बी. सीजर या सर्च या बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सीजर का है केस, वो फाइल नहीं हो सकता. और एक आपका वो प्रोसिक्यूशन का है. तो एक बात बताएंगे, ट्रिब्यूनल का पावर टू रिफ्यूज टू एडमिट एन अपील. अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन रिफ्यूज टू एडमिट एन अपील इफ द टैक्स, ITC etc does not exceed rupees how much? 50. नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला क्वेश्चन है कि मैं अपील लेने से मना कर दूंगा. नहीं, ट्रिब्यूनल की बात करें. ट्रिब्यूनल विल नॉट एक्सेप्ट द अपील इफ द अमाउंट इज डज नॉट एक्सीड रुपीज 50,000. Does not exceed rupees 50,000. What is the time limit given for memorandum of cross objections? What is the time limit for given for memorandum of cross objection? Normally, time limit of memorandum of cross objections 45 days and condonation of the delay 45 days. Condonation of the delay 45 days. अपीलेट ट्रिब्यूनल की फीस कितनी है? मिनिमम फीस कितनी है? ट्रिब्यूनल की मिनिमम फीस कितनी है? मिनिमम फीस
फॉर एवरी 1,01,000, बट एटलीस्ट मिनिमम 5,000 होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम कितनी है? 25 के। एंड किस टाइप के लिए? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का अगर ऑर्डर है तो कितनी फीस लगेगी? अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है तो कितनी फीस लगेगी? अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है तो हाउ मच फीस? नो फीस। करेक्ट। प्री डिपॉजिट कितना परसेंटेज है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्री डिपॉजिट? कितना प्री डिपॉजिट है? 10% प्री डिपॉजिट है। सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ सीजीएसटी, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 20 करोड़ सीजीएसटी एंड 20 करोड़ एसजीएसटी। अगर ये मान लो 129 का ऑर्डर है ई वे बिल के रिगार्ड में, तो कितना परसेंट प्री डिपॉजिट है? ई वे बिल की पेनल्टी का ऑर्डर है, देन कितना परसेंट प्री डिपॉजिट है? वेरी नाइस, 25% इज द प्री डिपॉजिट। 25% इज द प्री डिपॉजिट। 25% इज द प्री डिपॉजिट। हमने बात की थी 20 लाख की। वो 20 लाख क्या था? मतलब what was that 20 lakhs? We have discussed something about the 20 lakhs. What was that 20 lakhs? Last question. कोई मॉनिटरी लिमिट थी 20 lakhs की, उसका मतलब क्या था? What was that limit? अगर मतलब 20 लाख का क्या था मतलब? What was that? अपीलेट अथॉरिटी था या क्या था? मतलब what was the main concept for 20 lakhs? The monetary limit for filing the appeal by the department, filing the appeal by the department to the G state, by the department to the G state. And what was the monetary limit for filing the appeal by the department to the High Court? अपील अगर हाई कोर्ट को करनी है तो कितनी लिमिट है? 1 करोड़। एंड सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट 2 करोड़। By this, we have completed our today appeal and revision chapter. We'll meet on the next Friday for further discussion. Thank you very much. And Asuk ji, आज का क्लास कंप्लीट हो गया। ओवर्स। थैंक यू।